हेलो एंड वेलकम टू ए फॉर आर्सेनल। कैसे हो? आज तो एक सेकंड भी लेट नहीं हुआ है। आज लिटरली मैं जैसे ही शो टाइम वाला काउंटडाउन होता है ना, एक 8 9 8 7 6 5 4, जैसे ही 8 hit 0, ओ डैम, ब्रेकिंग न्यूज आते ही ब्रेकिंग न्यूज डेविड ऑनस्टीन से आई है भाई। डेविड ऑनस्टीन से ब्रेकिंग न्यूज आई है। बट कैसे हो आप लोग? यार मेरा इंटरनेट अगर एक बार थोड़ा सा एक्ट ऑफ करना बंद कर देगा तो मजे आ जाएंगे। But how are you guys? Nice to see you. Welcome to A for Arsenal. We are watching the Champions League matches tonight between Real Sociedad and Paris Saint-Germain. And of course, अगर आप लोग को साइड पे updates देनी है, you can always give me updates about Bayern Munich versus Lazio. Now हमें पता है कि इन दोनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम कौन सा होगा, and so we are going to stick with that one itself, यार. But Real Sociedad versus पारिस सैंट जर्मैन इज अ ह्यूज गेम भाई लोग। क्या हालचाल? मृत्युंजय कैसे हो? कॉस्मिक चैट आज आगे टाइम पे। यस माय ब्रो। शरियर हाय। शिवांश कैसे हो? सुनीत, नंदगोपन नायर कैसे हैं आप? अभी सर आप कैसे हैं? सुरेश, अर्घजीत, रोहित, नजमुल and Arush, welcome all, yaar. Thank you so much to all the 50 people who've already joined us, man. Absolutely huge. एक टाइम होता था when I used to get excited about 50 लोगों का पीक होता था चैनल पे। एंड अभिमन्यु, शार्दुल, ऋतिक, ट्रेसी, पेस मोबाइल भाई, कैसे हैं आप लोग? एवरीवन मैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यार, वी हैव सम ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन यार, एंड वी विल चेक दैट आउट ASAP बिकॉज डेविड ऑनस्टीन हमेशा बहुत बढ़िया न्यूज देते हैं। एंड ही हैज सेड डैन एशवर्थ हैज इन्फॉर्म्ड न्यूकासल यूनाइटेड that Man United have approached him relating to sporting director role at Old Trafford. There is no negotiation between clubs, but it is expected soon, and MUFC would need to pay Newcastle United significant compensation. Now, this is the natural next step for Man United, yeah, mere hisab se, to get Dan Ashworth. And Dan Ashworth is such a great pick for a sporting director, yeah. Dan Ashworth has worked in West Brom. वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा किया था. He worked in Brighton with Potter and उनके ओनर टोनी ब्लूम to create the first Brighton super team. जब वो प्रमोट हुए थे, इतने सारे डिवीजन में प्रमोट हुए थे, उसके बाद all those smart signing from Mitoma to Gross to Trossard and everybody, ये सारा डैन एशवर्थ का था. एंड फिर डैन एशवर्थ को पिकअप किया न्यू कासल यूनाइटेड के ओनर्स ने with all that Saudi money, and it was expected that Dan Ashworth will have a huge impact. So अलेक्जेंडर ईसैक से लेके सैंड्रो टोनाली के डील्स नेगोशिएट करना, ब्रूनो गिमरेश को कन्विंस करनी, ये सारा इसमें हाथ था डैन एशवर्थ का. एंड सो Dan Ashworth at Man United will be a huge thing. He will have more money. He will have more pull. He will have a lot more things at his disposal. In the right structure, Dan Ashworth is the perfect pick. Yeah, मेरे को तो लगता है. He was always favorite to take up jog. It was always a rumor. चलो आप लोग सू कर रहे हैं, अच्छी बात है. ओए बॉय व्हाट्सअप, कैसे हो? कैसे है राघव? नाइस टू सी यू हियर एज वेल. पहले सिटी से एक बंदा को लिया एंड नाउ न्यूकासल, दे आर वेरी एक्टिव राइट नाउ. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यार. This is Manchester United heritage. They pick up the best talents from everyone else in the Premier League. So first they picked up Barada from Manchester City, an elite CEO. COO जिनको उन्होंने CEO बना दिया है Man United का. And they have now picked up Dan Ashworth. What is different? भाई जब ये एड वुडवर्ड वगैरह सब होते थे ना, these are business people. Now they are getting footballing people in there. Now Barada, to be fair, he is a business person, but he's also involved in negotiations and everything as well. But Dan Ashworth is a pure footballing brain, yeah. Not happy that United are making good moves. Yeah, man. Neither am I. उन्होंने इतने साल सिर्फ बिजनेस वालों पे इन्वेस्ट कर करके मैन यूनाइटेड को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया. एंड नाउ दे आर गेटिंग दीज न्यू फुटबॉलिंग वंस. बट मैन यूनाइटेड पे तो अलग से बात होती रहेगी यार, कल भी बात करेंगे. Today we are watching PSG versus Real Sociedad. Where is it? Let me pop it up. Again, no timer. Apologies for that. I just came back from work. Prediction in both matches. Sanju bhai, you know what? We will do something fun today. And just because all of you guys have showed up in the first 5 minutes, you get to decide. Not you get to decide, but you get a unique opportunity, man. So, कौन सी टीम? We will pick this PSG and Real Sociedad match. All you have to do
is you have to pick which team will score first, who will score first, and in what minute. Type in, type it in the chat. Take a screenshot of that. Agar your prediction is spot on, because it's a very tough prediction to get spot on. Not only do you have to guess which team scores first, who scores first, and in what minute. अगर आपने ये बिल्कुल सही गेस कर लिया और whoever guesses it, वन एक चांस ही मिलेगा आप लोगों को भाई, एक चांस ही मिलेगा. Like you can only make one prediction. If I say two prediction, that person will automatically be disqualified, right? जैसे प्रभाव ने कर दी. प्रभाव इसका screenshot ले लेना. And so if Prabhav gets it right, I will give Prabhav a membership. Somehow, somewhere, I will gift Prabhav a membership. Just take a screenshot, and when that prediction comes true, you can tag me on Twitter. You have to follow me on Twitter for that. At Global Waffles on Twitter. Twitter नहीं है तो Instagram पे DM कर दो या tag कर दो photo upload करके. But the point is that you have this is if you want to get a membership on this channel for at least 1 month, then you can take part into this. So a lot of people will make their thing. Sunit, प्लेयर कौन सा करेगा? सोसिएडाड 14, बट विच प्लेयर विल स्कोर? जैसे प्रभाव ने करा है पीएसजी एम्बापे 18वें मिनट पे. सो 18th मिनट मींस 17:00 से लेके 18:00. दैट इज द 18th मिनट. ओके, सो ये इस बात का याद रखना. पीएसजी एम्बापे 12th मिनट. पीएसजी एम्बापे 12th मिनट. सो अगर आप अयान एंड इसमें हो गया तो आर्यहंत विल गेट दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैन, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम टाइम पे भी गेस करेंगे. पीएसजी एम्बापे इन द 26th मिनट. सो 25 एंड 26 के बीच पे पार्ट की जाएगी. इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना गाइस, ताकि आई कैन कंफर्म दैट यू गाइस हैव डन इट. नाउ Sociedad 1-0 at 22. That's perfectly fine, bhai. 140 people are watching, bhai. If you haven't liked the stream, kar dijiye subscribe. If you're new, lucky cap se mat lik mere bhai. Sociedad 7 thala for a reason. PSG Mbappe 34. 11 Kubo Sociedad. Perfect. Just keep a screenshot, man. 0-0 dead game, says Karthik bhai. Okay, Karthik bhai. Very unique prediction from you as well. Real Madrid believed after 12 years, Modric's cycle is coming to an end. Club wants a farewell worthy of a player, says Releva. Yeah, that's very sad, Yagari. He's an icon of the club. Be very excited to see. Guys, जो लोग नए आए हैं, पहली बात, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब इफ यूर न्यू, एंड प्लीज एक स्क्रीनशॉट आप डाल दीजिए, पुट इट इन द कमेंट्स, who will score, in what minute, and which team will score first. If you get it right, you get gifted a membership on this channel for a month. That's it. बायन की भी करें नहीं, इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रैक रखने के लिए. सो वी विल जस्ट कीप पीएसजी सोसिएडाड. वील जस्ट कीप पीएसजी सोसिएडाड. 96 तो यार क्वांटम फाइटर बहुत मुश्किल है. दैट मीन्स यूर अज्यूमिंग देयर विल बी a nil-nil game till the added time, and added time 5 minutes से ज़्यादा होगा. It's crazy. How do I join your Discord, Najmul? The first step is to buy a membership on this channel. Then there is a members only community tab जहाँ पे Discord link पड़ा रहता है, वहाँ से आप join कर सकते हैं. And yeah, that is the way to join Discord यार. It's not a open for all Discord. Discord एक काफी curated space है. Very limited people are in there. But it's a lot of fun, man. It's a lot of fun. Okay, just keep not 90 Donnarumma, says Harshad. PSG 10 Mbappe. All right, which team will score first, in what minute, and which player? PSG Zaire and 18 Zubimendi 63. All right, Sociedad पहले करेंगे 63rd मिनट में, says अजहर. नहीं यश, हमें ये नहीं देखने कि कौन हैट्रिक मारेगा नहीं मारेगा, पहला गोल कौन से मिनट में कौन सी टीम करेगा. And which player, of course. So you have to get 3 things absolutely spot on, man. PSG Ashraf Hakimi 27. Absolutely fine, bhai. Whose side am I on? That's a good question, yeah. And before we go on to my predictions and who I feel will win today's games, let's go on the lineups today, because the lineups are super interesting, guys. Okay, for PSG, Gianluigi Donnarumma, यार एक टाइम पे इतने बढ़िया prospect थे goalkeeping पे. Hype has died down completely. Beraldo, I'll be honest, he's young, मेरे को इतना ही पता है, and apparently he was highly rated, but उसके beyond I don't know anything. Danilo Pereira and Marquinhos in center backs. Ashraf Hakimi at right back. Zaire Emery bhai, and Brian Ruiz and Vitinha. Zaire Emery, the danger man. Barcelona legend. Usman Dembele, Kylian Mbappe, and Bradley Barcola. So, if you have guessed somebody like Gonzalo Ramos in the 9th minute, you want to change your prediction, now is the time to do it. I will accept changes in the prediction, but एक screenshot होना चाहिए आपके पास. Romero,
Javi Galan, Lenormand, Zubeldia. I really like Zubeldia. Traore. Is it Hamari Traore? Okay, I don't know about Hamari Traore. Bryce Mendes, Zubi Mendy, bhai. We are doing a Zubi Mendy watch. We are doing a Takefusa Kubo ka watch. And Merino भी खेल रहा है, Berencia भी खेल रहा है, and Silva भी खेल रहा है. So it's a solid team यार. Bench पे भी देखते हैं. Umar Sadiq can come off the bench and do something. बाकी तो मुझे आई ऑनेस्टली आई एम नॉट टू फेमिलियर विद सोसिएडाड का बेंच. पीएसजी का बेंच देखो, गुंसालो रामोस, असेंसियो, कोलोमुआनी, कॉलर सोलर, उगारते, लूकस हर्नांडिस, नोडी मुकिएले, अर्नोटेनास, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं पीएसजी के पास यार. सो हु डू यू थिंक, प्रभाव जैसे पूछ रहे आप कौन सी साइड पे, हु डू यू थिंक भाई is going to win? And 4 more minutes and उसके बाद से I will not accept any screenshots by Mbappe in the second minute, says Ritik. Okay, Ritik. No Kang In Lee. No Kang In Lee is a very surprising thing. Maybe Asia Cup से आने के बाद कुछ चल रहा है. There's a very surprising news about Kang In, yeah, that him and Son actually fought, which was भाई crazy scene यार. क्या चल रहा है प्रेडिक्शन का? कुछ नहीं चल रहा है. बेसिकली यू हैव टू प्रिडिक्ट in the PSG Sociedad game which team will score first, which player will score first, and in what minute. And if you get that right, you get a membership on the channel. PSG Dembele 43. अगर आप लोगों को लाइनअप वापस देखना है, आई विल शेयर इट टू यू अगेन, ताकि आप लोग गलत प्रेडिक्शंस ना करें. आप डाल सकते हैं if somebody wants to put Gonzalo Ramos in the 9th minute, but something extraordinary has to happen, that somebody has to get injured and Ramos has to be subbed in and he has to score all within the first 9 minutes. डिफरेंस बिटवीन सीईओ एंड सीईओ यार ऑनेस्टली ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है, बट एसेंशियली क्या होता है, सीईओ ऑपरेशन संभालता है, डे टू डे वर्किंग का सबका बॉस वो होता है सीईओ, एंड सीईओ इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक गाय who will define the long term position. So they are usually C suite people, that is higher managerial positions वाले लोग होते हैं जो एक साथ काम करते हैं. एक बंदा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन देगा, दूसरा बंदा ऑपरेशंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी से लेके सिक्योरिटी से लेके मैनेजमेंट, पीपल, डिलीवरेबल्स, क्लाइंट्स, ये सब का बॉस होगा. दैट इज अ सीईओ, एंड सीईओ इज अ लॉन्ग टर्म गाय. आई वांट पॉल मिचेल, says मृत्युंजय. रियल सोसिएडाड मेरिनो 34. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस, बिकॉज मेरे को तो ऐसे याद नहीं रहने वाला है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रेडिक्शन विद द टाइम, ताकि मुझे पता चले कि आपने बाद में तो नहीं लिया ना स्क्रीनशॉट. सो योर स्क्रीनशॉट शुड बी विद द टाइम, एंड दैट इज इट भाई. Modi ji scouting Zubi Mendy for Arsenal gunner forever by 100%, man. We are here for a Zubi Mendy watch. We are here for a Take watch. And you know what? To an extent, even Zaire Emery, bhai. Kubo 25th, Mbappe 21st. All right. And जिन लोगों के पास membership है, आपकी next month की membership is on me. No caps, जैसे Tracy कह रहे हैं. And guys, 200 people are already in the first 15 minutes. Absolutely huge. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए. Subscribe if you're new. Now let's move on to Bayern Munich against Lazio at Lazio's home. Now, Bayern Munich Leverkusen के साथ हारी थी. बहुत पेन हुआ होगा. But Neuer is in goal. Rafa Guerrero makes his start at left back. Kim and Upamecano as centre back pairings. Mazraoui at right back. Kimmich Leverkusen game में omitted थे. He makes his start again with Goretzka in the middle. Musiala, Muller also makes his start again with Leroy Sané. And Kane, no Pavlovic, nobody. He is not taking any risks. Bench पे Choupo-Moting, Tell, Pavlovic, Brian Zaragoza, bhai. He is him, bhai. Brian Zaragoza, what a player. डेरिक डायर हैं, मतीस डिलिक्ट हैं, साशा बोई जो लास्ट गेम में लेफ्ट बैक खेले थे, राफा गरेरो उनकी जगह आए हैं, उल्रिख तो उनके गोलकीपर हैं, एंड मैक्स श्मिट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता. अगर आप लाजियो को देखें, प्रोवेडेल जिन्होंने चैंपियंस लीग में गोल भी मारा हुआ है, हाइसाश, रोमान्योली, गीला मारूसिच, ग्वेंडूजी एक्स आर्सेनल बॉय, वेसिनियो, लुइस एल्बर्टो, फिलिपे एंडरसन, सिरो इमोबिले एंड ईसाक्सन. So standard lineup for Lazio, I would say. मैंने Lazio को ज़्यादा नहीं देखे, but there are some recognizable names here. So now we will take predictions, man. In the PSG versus Sociedad game, not who you want to lose, but who do you think will lose? I know यहाँ पे एक anti PSG चलती रहती है wave हर जगह, but I'll be honest, guys. I think PSG are dark horses for the Champions League, man. They have a solid team. They just lack chemistry, and there is also Luis Enrique. Let's not forget. So, who do you think
between PSG and Sociedad. Who will win? So PSG. Let's do a poll, guys. Let's do a poll. The first poll of the night. So we'll start a poll, and who will win between who will win in Paris? Who will win in Paris? Is it in Paris? I think it's in Paris. Is it going to be PSG? Is it going to be RSO? Or is it going to be a board draw जैसे कार्तिक भाई कह रहे थे? Put your vote in the poll. We will see at the end थोड़े टाइम में कि क्या होता है. um, PSG 4 2-2 draw. Mbappe to Arsenal भाई. Afan भाई, come on Afan भाई. RSO 3-1 जीतेगी भाई. I know everyone wants Sociedad to win. I secretly want Sociedad to win. um, because I think PSG is, अगर Arsenal PSG के साथ कभी draw होती है next round में, if Arsenal make it through and PSG make it through, it's gonna be tough man. um, कुछ स्टैट्स जो आपको टीवी पे भी दिख रहे होंगे शायद से. रियल सोसिएडाड वेंट अनबीटन in their group stage. 1-3, drew 3. They haven't lost a game in the Champions League group stage. So do you think can PSG hand them their first loss today, bhai? Sociedad will lose, but in a very tight game. Mbappe to Arsenal to chhod do. PSG will win. Arsenal and Inter could be dark horse. I agree, but I think PSG is slightly above them. Although अगर आप बेटर्स की बात करो, जो bet 365 ये सारी जो betting sites हैं, इनके हिसाब से the favorites are Man City, followed by Real Madrid, followed by Arsenal, followed by PSG, and then Inter, and then everyone else. Close to 100 likes, guys. Come on, let's get 100 likes. 200 लोग आ गए हैं. At least half the likes तो कर लेने चाहिए. Second leg at San Sebastian, it's going to be a long night for PSG only if tie is alive. Now, PSG in the Champions League have been very hot and cold, right? Some games they absolutely dominate, but you remember that game against Newcastle, PSG के चत्थे पड़ गए थे भाई. मतलब ऐसा लग रहा था PSG तो PSG ही नहीं है. PSG will win this one. Real will defeat them at home. Arsenal will hammer them IMO as they have good defense. Manifesting circle for RSO when Joshua is back with his revenge. Yeah. Enemy of my enemy is my friend. Logic लेके कैसे हो Joshua? Nice to have you here. I will not say this word, but I completely understand Slippy G. PSG facing Spanish team having real in name. Bhai, bad memories for them. It will be an Mbappe show, says Arihan. And I have a feeling, bhai, Mbappe might rise to the occasion today. Mbappe might rise to the occasion because I think if PSG gets eliminated in the round of 16, there is no way Mbappe stays. There shouldn't be a way Mbappe stays. Happy Valentine's Day, yaar. Aaj no long distance love. No, man. She is working. I was working. No long distance love. Pleasantries were exchanged, gifts were exchanged, love yous were said, and that is basically it. Sociedad के oh Sociedad के last 4 games में से 3 games out of the scoreline nil. That could be huge. If Sociedad draw today, I think that's a decent result for them. मेरे हिसाब से it's a decent result for them. What do you think can be the possible opponents for Arsenal in the quarters? यार पहले तो हमें round of 16 से निकलना. I am not going to take it so lightly also. I think it will be very surprising for a lot of people. Arsenal actually Porto के against away कितना struggle करेगी. I think home पे हम उनकी तहस-नहस कर देंगे, but away को हम कैसे negotiate करते हैं बहुत important होगा. लौड़े का वीडे आपको नहीं. हाँ, मैं तो हमेशा रहो. समझ गया. Thanks है प्रथम. कैसा है? Nice to have you here. Here for a Kubo Liverpool watch. Arey baap re Najmul. So you are also doing a Takefusa Kubo watch. I am doing a Zubi Mendy watch today, bhai. Kaise ho Devesh? How are you? Ishan, back again, man. Ishan is becoming regular again. Like reminiscent of the old times, man. Ishan has seen this channel when 18 people used to show up. वो भी मुश्किल से 18 people used to show up and it was like, oh, wow. And now 223 people in the first 20 minutes, man. So amazing. Thank you so much, all of you, man. From when am I supporting Arsenal, bhai? 2000 se 2000 2001. ATM this season, bhai. They could be really good. We talked about Ashworth, bhai. We talked about Dan Ashworth, Rishi, bhai, in the beginning, right in the beginning. That David Onstein tweet, we talked about it. Dragao will be very hard. I agree. Japani Messi for the win. I can't believe. Well, I can sort of believe why Real Madrid let him go. But shout out to Real Madrid ka is pe bhi sell-on clause hai. So whoever buys Take Kubo, even after his contract extension, man, Real Madrid will rake in money. मैंने क्या बोल दिया? मैं rope in money बोल रहा था, फिर rake in money सोच रहा था, and mix होके it turned out to be something terrible. How in 2000? Because I was born in 94, buddy. That's why.
आपकी एज कितनी? आई एम 29. I am backing. My heart is backing Real Sociedad, man. I want Zubimendi to have all the success before he makes his move towards Arsenal. ठीक है? Zubimendi भाई, तू पूरा चैंपियंस लीग का कैंपेन मस्त मौजा करके अच्छे से मना ले, and then join the Arsenal, man. Join the Arsenal. Pair up with Declan Rice, and let's run this show in England, bro. Come on, Zubimendi. ठीक है? Have the most successful campaign at Sociedad. Hakimi future, nobody knows, man. Nobody knows. Very few teams actually need a good right back, and I think he's pretty at home at PSG, man. गाली मत लिखो, बहुत टाइम आउट दे देगा. सही बात बोली है ट्रेसी ने. कुछ वर्ड स्पैम फिल्टर्स पे गाली दोगे तो आप हो जाओगे बैन. आई एम सॉरी. आई लाइक टू ऑर्गेनाइज माई चैट इन अ पर्टिकुलर वे. आई लाइक टू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी इवन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ. As well, we are on the way to 14K, guys. 13.6, if I'm not wrong, is what we're at. Right, let me check. 13.6 is what we're at. Ishan has joined the membership. Ishan, thank you so much for joining the membership. You absolute legend, man. So I have a feeling that Real Sociedad should win. I think PSG, जैसे पोल कह रहा है, will win. We are at 13,658 subs. Our target today is 13,700 at least. Um, Lucas Hernandez is injured, so Baraldo start. Hernandez is on the bench. You're right. Um, PSG 37 Barcola. This is now the last 2 minutes of predictions. Again, your predictions have to be with the time in the screenshot, okay? जो लोग मिस कर गए, unfortunately you have missed. I am regular now, so I bought. Thank you so much, man. And you bought Youth Academy. So Ishan, you can join the Discord, man. From the members only community tab, there is a link there. आप कर सकते हो. तुसी ग्रेट हो. थैंक यू सो मच सामिन. आप आपसे ज्यादा ग्रेट तो कोई नहीं हो सकता. जूबी टू बारसा विल बी देयर. भाई ये वाला हम पे छोड़ दो यार. यू फिगर आउट व्हाट टू डू विद फ्रेंकी यार. तुम लोग फ्रेंकी का निपटाओ, तब तक हम जूबी मेंडी को ले लेते हैं. बेसिकली दैट्स द थिंग. दैट्स व्हाट आई वांट. दैट्स व्हाट आई केयर फॉर. I don't think Frankie de Jong is going to move from FC Barcelona, and I think Zubi Mendy के लिए we should go all out for. हेलो भैया, बायन को देखने आया हूँ. टैलेंट. Unfortunately for you, we are watching the PSG Sociedad game. I think Bayern Munich will win the other one fairly easily. We'll run a quick poll for that as well. Although I have no doubts between Lazio and Bayern Munich who should win, and who do you think will win? So who is going to win in Rome today, bhai? Lazio versus Bayern Munich. Again, Bayern Munich from that Leverkusen loss uh, will be reeling here, but can they bounce back? Can they get a victory away from home at Lazio? मैंने आपको लाजियो का दिखाया था. सीरो इमोबिले हैं, लुइस एल्बर्टो हैं, फिलिपे एंडरसन है. कुछ कुछ वेरी रिकग्नाइजेबल प्लेयर्स हैं यहाँ एट लाजियो. नो वेट, लुइस एल्बर्टो लाजियो में था. हाँ, उसमें ही होगा यार. There's some recognizable players, right? Guendouzi is also there. Romagnoli is also there. Provedel is also there. So, um, who will win? I think it's gonna be Bayern Munich, man. And draw का भी option डालना पड़ेगा उधर. So yeah, Milinkovic Savic, he's moved to Saudi. He's moved to Saudi already, my friend. He moved to Saudi in the summer. I think Bayern are going to go out in the round of 16. Imagine Rishi bhai, if Lazio knocks them out here, it'll be a huge giant killing move. For me, you know what will make me happy? If Real Madrid and Man City, when they qualify, they meet each other in the quarters, man. Let them do it. Let them meet each other. Let one of the favorites get eliminated. Although वो गरम गरम वाले जो balls होते हैं, जो सस्ता क्लॉडियो रेनियरी किसी को बोलेगा पिक करने के लिए, will make sure that Real Madrid and Man City do not move forward. At least they won't meet right now. मेरा कमेंट हाइड हो जाता है क्या दक्ष भाई? डोंट केयर अबाउट माय कमेंट्स. नहीं भाई अनुशेष, ऐसी बात नहीं है. अगर आप गाली लिखोगे, अगर आप कैप्स में लिखोगे, अगर आप ज्यादा इमोजीज यूज करोगे, अगर आप बहुत लंबा मैसेज लिखोगे, अगर आप गालियां लिखोगे, तो आपका मैसेज अपने आप बॉट हाइड कर देता है. ऋषि मल्होत्रा, बायर्न एट चैंपियंस लीग इज डिफरेंट ब्रीड. आई एग्री टैलेंट, आई कंप्लीटली एग्री. आई थिंक दिस विल, ये जो लेवरकूसन वाला लॉस है ना, आई थिंक इट हैज समवेयर विल शेक बायर्न अप. आपको टीम सिलेक्शन में ही दिख गया है यार. Now, none of that Kimmich benched and all of that nonsense. Kimmich is starting, Muller is starting, Zane is there, Musiala is there, Kane is there. भाई ये लोग तो जाएंगे, and I think they will smash Lazio at least 3-1 or 2-0 today. So I think Bayern Munich will get that win today, for sure, for sure. Swandeep, Daksh bhai, I'll give you a fair deal.
I'll give you a fair deal. Say yes or no. Partey Jorginho plus 70 million. Arre baap re. Nahi bhai. I think Partey Jorginho themselves are worth like 37 million, and it's better that you buy them from us. And then we give you money like 80, 90 for Frankie. But because that helps with accounting. I think Frankie is going to stay eventually. Agree. I agree. I think so too, Vatsal. I think so too as well. How will you feel when Arsenal wins UCL? Let's be honest, kabhi na kabhi to jeetegi na. Can we expect a twerk live? Tell me one thing. There are some beautiful bottoms out there on the internet. उसमें से सबको छोड़ के why do you want to see me twerking? Right? Arsenal जीतेगी so see me happy, see me ecstatic, see me emotional. ये सारी बातें आप कर सकते हो. Why do you want to see me twerk, brother? Come on, man. नहीं है, no twerking unfortunately. Kimmich next season कहाँ जा रहा है? No idea, man. I have a feeling he'll come to either the Premier League, maybe to one of Man City or Liverpool, or he will go to Barcelona. Barcelona. टूकल को बायन शायद से यूरोप के लिए है. कैसे हो ऋषभ? नाइस टू सी यू. इमोबिली completed 200 goals in Syria. Underrated player. Yeah, he had an incredible start. Then he moved to Dortmund, failed. Then he moved back to Syria. अच्छा हो गया. Gabby J return? No idea, bhai. No idea. But hopefully by the end of this month, we find a fully fit squad for Arsenal, bhai. मैंने तो कोई गाली नहीं, पता नहीं यार, कुछ ना कुछ यू मस्ट हैव ट्रिप्ड अप सम सॉर्ट ऑफ बॉट का फिल्टर यार, कुछ ना कुछ कर दिया होगा. किमिक टू सिटी और बारसा. सिटी ले लेगी किमिक. देखते हैं, देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल एडवर्ड्स एंड रिचर्ड ह्यूज पोटेंशियल कंटेंडर्स टू रिप्लेस. ओ ब्रो, इफ एडवर्ड्स गो टू न्यूकासल मैन. या रिचर्ड ह्यूज, आई हैव नो आइडिया हु रिचर्ड ह्यूज इज. ये सैमी मुकबेल कह रहे. सैमी मुकबेल ऐसे बकवास यूजुअली लिखते नहीं है यार. रिचर्ड ह्यूज कौन है? रिचर्ड ह्यूज प्रीमियर लीग का कुछ होगा यार. रिचर्ड ह्यूज स्कॉटिश फॉर्मर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ बोर्नमथ. Interesting. Okay. Man City, due to his relation with Pep, he thrived in Bayern, and I don't think he'll downgrade to Barca. Because Bayern is far better project than Barca, but City is different. I understand, man. Oh God, खुशी का comment miss कर दिया. Damn. Excuse me. Guys, I will have to stop the chat for a second because I have to find my girlfriend's comment here first. Hold on. Where is she? Kush, I can't see it, man. I can't see it. Yeah, Kush has texted me. She has called me, which means it is my death when this stream ends. Simple si baat. Anyways, we're back. Kimmich to Newcastle could be good. Lol. Is Kushi my real girlfriend? Yes, she is my real girlfriend. Did Trossard justify his signing? Oh yeah, 100% भाई. मैं हमेशा कहता हूँ विनय, wake up, thank God we got Trossard instead of Mudrik, eat, sleep, repeat again. डेथ स्ट्रीम होगी भाई. दिस इज द लास्ट स्ट्रीम. इसके बाद हमारी डेथ होने वाली है. सो एंजॉय माय फाइनल मोमेंट्स यार. Capital letters, bhai. It is over for me, bhai. It is over for me. And imagine the bot has timed her out as well. Crazy scenes. Is there any concrete news about Zubimendi to Arsenal? Cold Spidey, the only news is that Arsenal have been working on the Zubimendi deal for months. Okay. Okay, Kush, enjoy it. I hope you enjoyed your break. I sent you the money. मजे करो. And it's Kushi present in the room with us. Yeah, of course. अभी मत मारो, अभी तो membership ली. Yeah, man. Wholesome stream. Thank you so much, भाई. And आप लोगों को भी Happy Valentine's Day. How did you spend your Valentine's? Now, हमने फुटबॉल की थोड़ी बहुत बात कर ली, हमने डैन एशवर्थ की बात कर ली, हमने उनके रिप्लेसमेंट की बात कर ली, फ्रेंकी की बात कर ली, जुबीमेंडी के लिए मैं बस कह रहा था दैट आर्सेनल हैव बीन वर्किंग ऑन दैट डील फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड यूजुअली जब इतना हम ग्राउंड वर्क करते हैं, either we usually get the player and he turns out to be really good, or we also have a list of backups जो उनकी जगह आ जाते हैं. Studying for both. Damn son. How was your day? My day was pretty normal, man. Just went to work. घर आया अभी. Yeah, but I will be going to London to meet my girlfriend. So that will be nice. So yeah, there is no watch along on this weekend. Arsenal versus Burnley. We will not be doing a watch along, but you can follow me on Twitter for my live thoughts on that game. Is Harry Kane cursed? I don't think so, man. I just think Bayern are in a slump right now.
simply because Thomas Tuchel is trying something different. He wanted certain kinds of players last summer, this summer, last year he also wanted some kind of players, and nahi hua. He didn't get those players. Palinia's transfer fell off in the last minute, right? बहुत सारी चीजें उसको चाहिए थी यार जो उसको नहीं मिली मेरे हिसाब से. So I don't like. I think Bayern are just in a flux right now, and I think the Leverkusen loss, especially if they end up losing the title, will shake the Bayern board into awakening, and I think they will be back to the standards. One sometimes, yeah, they have won 13 titles, 11 titles, जितने भी जीते वो in a row, ठीक है. कभी ना कभी तो complacency set in होती है, and एक अच्छा झटका भी मिल गया. भाई Renesu is also है. भाई shout out Renesu, insane guy man, amazing result in his JE, and of course friend of the channel. Yeah, he is amazing guy. W for Renaissance because he's just an amazing guy. चलो भाई, पर स्ट्रीम की जो हमारी रेनेसो की चाटनी होती है वो हो चुकी है. You can take me out of Tottenham, but you can't take Tottenham out of me is real. Does Dee watch football as well? No, man. No. She's just happy when I win. And she just prays that Arsenal's win. That's it. ताकि मैं भी खुश रहूं. कट्टी दक्ष भाई, किस बात की कट्टी भाई? किस बात की कट्टी? Uh, कैसे हो संजीव? Renesu is the channel, to be honest. I agree, man. Harry Kane planning meeting with Chatterjee of RM to find the solution to his. भाई Chatterjee is unique, man. Chatterjee is unique. सच सच बताओ, डर लग रहा है ना? ना ना, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा. आई एम फाइन. ये तो होता ही रहता है. ऊपर देखो यार, ऋषि भाई 150 लोगों की चैटें आई होंगी यार. रुक जाओ. वेयर इज ऋषि भाई? ऋषि भाई की तो पिक्चर भी शुड स्टिक आउट मैन, जैसे ईशान की करती है. डेथ स्ट्रीम होगी. पक्ष भाई, आई डिड नॉट जॉइन आईएसबी. मेरे को एसआईबीएम से स्कॉलरशिप मिल गया. मैं लिया क्लासेस अप्रैल, फुल वेला हूं अभी. ओ डैम, कंग्रेचुलेशंस ऋषि भाई, ह्यूज फॉर यू एज वेल मैन. एसआईबीएम जा रहे हैं आप? ओके. Wow, and your classes start from um your classes start from April. So are you going to go to Pune? SIBM में वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ. Yeah, are you going to go to Pune then? Insane. अगर केन रियल आता तो रियल ट्रॉफी लिस्ट जाता क्या? एग्जैक्टली, इट वोंट हैपन मैन. रेनिसू को हाफ इनकम मिलनी चाहिए चैनल की. भाई आई लव रेनिसू, बट आई डोंट लव हिम सो मच. भाई हाफ इनकम तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं देता. या हैरी केन कॉल्ड पॉगबा टू हेल्प हिम. डैम. The Messi FC or Cristiano FC? She is Neymar FC actually. She is Neymar FC. Hola Mr. Test, how are you? कैसे हो? Nice to see you again. Thank you for subscribing the workout lab. I hope your workouts go really well, man. Define Mesut Ozil in one word. भाई maestro. Half income में आता ही क्या होगा? ना ना, half income. Yeah, that's true actually. कुछ नहीं आता half income में. Neymar in big 2024. भाई she's liked Neymar for a long time, man. Long time. अब जो है सो है यार, हम क्या कर सकते हैं. इनकम नहीं, आपका चेहरा काफ़ी है. जल्दी 120 मेंबर्स करवाओ. या दैट इज ट्रू मैम. आई हैव प्रॉमिस्ड रेनिसू दैट आई विल मेक हिम अ पेड मॉडरेटर ऑफ द डिस्कॉर्ड द डे वी गेट रेगुलर 120 members. So yeah, if you want to help Renisu earn money, join the membership. It helps the channel grow. It helps Renisu also grow. बंदे का कॉलेज लाइफ बहुत आसान हो जाएगा. What are you, Messi FC or Ronaldo FC? I am Ronaldo FC, unfortunately. मुझे पता है ऑफेंडेड गॉब्लिन, आप मेसी एफसी हैं, बट आई हैव ऑलवेज रिलेटेड मोर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो. भाई खुशी दी भी फुटबॉल देखना ही देखती है यार. अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट इनटू ऑल ऑफ दिस ड्रामा, इमोशंस एंड एवरीथिंग. बट नो, शी इज अ स्वीट हार्ट मैन. ऑफ कोर्स एक कप कॉफी आता है हाफ इनकम में. दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेमर सेक्सी तो है. आई एग्री मैन, आई एग्री. ही इज अ ग्रेट लुकिंग लैड. एंड उसका जब से उसने वो अपना वाइकिंग स्टाइल वाला हेयर कट कराया ना, इनसेन. शी स्टार्टेड विद नॉनवेज. ना मैन, शी स्टिल अ वेजिटेरियन. आई एम केन एफसी से टैलेंट. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. डब्ल्यू दक्ष, मेरे बोर्ड्स में 96% नहीं आया तो एनएम नहीं लिखूंगा. नहीं नहीं क्या, तो नारसी मुंजी नहीं मिलेगा. और मैं सेकंड चॉइस एचआर कॉलेज, वो नहीं मिला तो क्या करूंगा. डर लगे यार. देख रहा तो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में ही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर कॉलेज इज नॉट बैड. ओके, यू कैन गो टू नारसी ऑल्सो. नारसी इज अमेजिंग. एवरीवन नोज नारसी इज अमेजिंग. बट आई विल से दैट एचआर इज ऑल्सो फाइन. रिलैक्स ब्रो, इतना प्रेशर मत डाल. तू बस काम कर, अपने आप फल मिल जाएगा तेरे को. टू ऑल प्रेम वॉचर्स, हाउस ब्राइटन डीएम ओनाना. ब्राइटन में नहीं है वो. ही इज इन एवर्टन. सो ही इज द एवर्टन डीएम ओनाना. And he is a very, आप सोच ले, he's a young guy.
He's tall, he's physical, but he's very raw. His passing is very suspect. He sometimes get caught in possession, and kabhi kabhi he gets super adventurous and progresses way beyond his DM lines and takes a shot which goes absolutely nowhere. So yeah, डीवाई पाटिल चल जाए ब्रो। ये अम्बापे का क्या सीन है भाई? 5 साल हो गए अभी तक सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अम्बापे का क्या सीन है? नो बडी नोज भाई। Yeah, Everton. What are your thoughts on Bakayoko? Johan Bakayoko as a Saka backup यार। यार देखो, मैंने इसको कल भी एड्रेस किया था कोल्ड स्पाइडी। द लेवल ऑफ प्लेयर्स दैट वी वांट नाउ आर गोइंग टू बी ईदर प्रीमियर लीग प्रूवन और एक्सपीरियंस्ड और वर्ल्ड बीटर्स। ठीक है, योहान बैकोयोको is a kind of player जो I would expect to go to Liverpool, which are restarting their cycle, or Man United, who are in the middle of transition instead of Antony, but वो आपको पता है रीडे वीजे वाला फिर मीम बनने लग जाएंगे, or to somebody like Tottenham Hotspur, to be honest, right? uh, बाकायोको इज somebody मेरे हिसाब से जो हम नहीं लेना चाहिए। अगर आप में विंगर्स चाहिए, यू हैव टू गो फॉर निको विलियम्स और यू हैव टू गो फॉर पेड्रो नेटो। ठीक है, निको विलियम्स मुझे लगता है उसकी पोटेंशियल वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी वर्ल्ड बीटिंग पोटेंशियल। यू कैन सी देयर इज अ रीजन व्हाई बार्सिलोना इज आल्सो sort of interested in him, but Pedro Neto is also a Premier League proven winger. The problem is his hamstring and his ACL is made up of cheese, so वो हमें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Johan Bakayoko is what Adama Traore wants to be, says Rishi bhai. Sesko to Arsenal thoughts, Daksh bhai. मैंने यार इसके बारे में कल पोस्ट गेम ट्वीट किया था that Sesko is a very raw talent. Um, he is tall, he is pacey, just needs to improve control, just needs to improve decision making. Will be a great project signing for any team who is at the first cycle or beginning cycle of the project. Pedro Neto United आएगा, बिल्कुल भाई ऋषि भाई, बिल्कुल। The only players that I see at Liverpool right wing are Bowen, Rodrigo, Kubo, any of this. Pata nahi yaar Devesh. All depends on who is going to be the next manager. All depends on what is the kind of boardroom structure that you put around that manager and what is the ambition of the owners uske baad. Sesko to Chelsea makes sense. Yes, but I think again the fans will be on his back so much. The fans will be on his back so much. It is like a Rasmus Højlund kind of signing. Rasmus Højlund is a great striker, but Man United में अभी तक at least अभी तक the atmosphere of the boardroom, there is this underlying toxicity जो जिसके बावजूद Rasmus Højlund shine कर रहा है. He is now surviving and doing well, but in a better environment, with a more stable environment, with a more progressive approach to attack, to coaching and everything, Rasmus Højlund will thrive. तो सेस्को का मेरे को ये लग रहा है जब तक पॉच है, ये बोर्ड एंड फैंस का जैसे एक सॉर्ट ऑफ एयर ऑफ टॉक्सिसिटी है, तब तक सेस्को शाइन नहीं करेगा. It's all going to be about the atmosphere, man. It's all going to be about the atmosphere. It's like take Gabriel at Arsenal, for example, right? Gabriel was one of the first signings, if not the first signing that Mikel Arteta made. At that point of time, the club was in flux. The club didn't know what to be like. हम identity recreate कर रहे थे अपने, and वो बहुत बोझो errors करता था. But look now in a stable environment, जो अच्छा सा club progress कर रहा है. Look how imperious Gabriel is, right? So you think about Gabriel Magalhaes and you think about all these players. Sometimes the environment of the player matters so much. इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ प्लेयर्स एक क्लब में थ्राइव नहीं करते. जैसे सेरो इमोबिले डिड नॉट थ्राइव एट डॉर्टमंड, but he went back to Italy and like somebody mentioned, he broke 200 goals. Same with Ibu Konate. Yeah, मेरे को तो लगता है words to Liverpool could be a possibility if Xabi comes. Yeah, if Xabi Alonso goes to Liverpool, man, some of these transfers will be super interesting. Like for example, Xabi Alonso has a connection with San Sebastian, so maybe Zubimendi के लिए Liverpool जाएगी. They are in for him, by the way. Liverpool is a dark horse contender for Martin Zubimendi's signature. And if Xabi Alonso goes there, it could be a very important factor in Zubimendi की choice कि वो बारसा जाएगा या लिवरपूल जाएगा या आर्सेनल आएगा, right? So there's yeah, Gracie at ATM is a perfect example, Harshit. Barca में he arguably had better players around him. So in terms of personnel, he had the perfect setup to thrive. But environment अच्छा नहीं था यार. It was going down धीरे धीरे. And look at him at Barcelona again. Atletico again. He's rediscovered his best यार. Football is about optimum environment. Exactly yaar. Thank you so much Eric Ten Hag. Nice to see you again here as well. I think Ulises transfer is going to be an interesting one to watch. Apparently,
मैन यूनाइटेड आर गोइंग टू चेज आफ्टर हिम. इसलिए मुझे लगता है जो ऋषि भाई ने कहा ना वो वाला, आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग दैट this Olise guy will go to Man United. Anyways, guys, Park the Prince पे light show शुरू होने वाला है. That means the game is about to start. It will start in 5 minutes, यार. फुटबॉल इज ऑल अबाउट हो गया, ओलिसे का हो गया, जूबी मेंडी टू लिवरपूल हो सकता है. गॉड गो स्लीप या गुड नाइट बत्सल. वीडियो लाइक नहीं करी तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब इफ यू न्यू. I think a perfect transfer would be Barella, Chiesa, Tapsoba, maybe Frimpong if we can sell a few. All right, Rishi bhai, देखना पड़ेगा because a lot of clubs will be in for the same players. Olise is more injury prone than Neto, that is true. And जैसे Mark Goldbridge कहता है, he is a thug. भाई crazy scenes. I can't believe Mark Goldbridge said that with a straight face. I would get Frankie de Jong ahead of Zubimendi for Arsenal. Nishit, you and I both, but I think that is such a complicated transfer because one, you have to convince Barcelona to sell at a reasonable amount. Because if you get Frankie but you can't get your other targets, then you're at the same place, right? One, you have to convince Barcelona to sell at a reasonable price. Two, you have to convince Frankie to move. Three, you have to pray that Barcelona and Frankie के बीच की जो deferred wages वाली negotiation है, they go out smoothly. So once that all happens, then maybe you can hope that Frankie comes to Arsenal and he absolutely, blasts. And there are, to be honest, Zubimendi has a release clause, a reasonable release clause that we can try and pursue, right? Zubimendi के साथ हमने काफी काम भी किया है, in the sense that we've worked on this signing for a long time. So one is an easier signing but a lot more unknown, the other is a lot more known quantity but very expensive and very difficult to convince to move. Where do I see Dybala next year? I don't know, man. I think he might stick it out at Roma only. जा रहा हूँ पढ़ाई करने, यूसीएल से घर नहीं चलता. बिल्कुल सही बात. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, मैन. बेस्ट ऑफ लक. लिवरपूल विदाउट क्लब बहुत प्लेयर छोड़ के जाएंगे. नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैन. आई थिंक इट्स ओनली गोइंग टू बी Salah. That's it. I think Salah's going to be the one. Zubi watch today, bhai. We are doing both Zubi and Take watch, and also a little bit of how Luis Enrique does this. भाई ये रियल सोसिएडाड की तरह खेलती है. भाई ये रियल सोसिएडाड किस तरह खेलती है, एंड डू दे हैव अ चांस अगेंस्ट पीएसजी? सोसिएडाड प्लेज वेरी अट्रैक्टिव कंट्रोल्ड फुटबॉल. They also operate in spaces. Their positional principles are very nice. They have some really, really good players. They're not too counter-attacking. Neither they are too possession dominant. They're like in that perfect sweet spot. But they like to be on the ball. On the other hand, PSG, man. PSG, they will establish some control in the middle through their passing and their defense. But their most lethal weapon is that Kylian Mbappe run behind. FDJ wants 400k. Barca offering 400k per year. Lol. किससे सपोर्ट कर रहे हो यार? आज टुडे इट्स सोसिएडाड. My heart says Sociedad. I want all the dark horses to be eliminated, Renesu. इंटर एंड एथलेटिक में समझ नहीं आएगा किसको सपोर्ट करना है, बट आई वांट ऑल द डार्क हॉर्सेस एलिमिनेटेड. वी वांट पीएसजी आउट, इवन दो सोसिएडाड कुड बी अ बिग इशू. आई वांट मैड्रिड एंड सिटी टू गेट मैच्ड अप इन द नेक्स्ट राउंड. भाई बहुत सारे करना. वीवीडी आई डोंट थिंक he'll leave. Not for a while. Not for a while. Again, all depends on the new manager, the kind of style he wants to play. But few managers in the world will say VVD does not fit me. Where do I live? I live in Dublin in Ireland. And guys, remember, जिन लोगों ने कर दिया है prediction, अब तो हो गया. Lazio winning today, says Eric Ten Hag. No spoilers, yaar. It's a watch along. I will tell you when the game kicks off, and try not to spoil the game. I'll really appreciate all of you. Get Inter out. This Inzaghi guy is insane in cup competitions. Agreed, man. But then you also have Cholo, who is a defensive master in himself. So imagine Arteta basically facing against Arteta with better players up front like Grizzy and Morata and all these guys. DePaul. Bhai, I sometimes feel that Arsenal sort of resembles Atletico Madrid at a lot of levels. But Atletico have slightly better players forward. Like they have Grizzy, they have Morata, बीच में उनके पास DePaul है, who is this physical specimen, right? They have a solid defense as well. They have Oblak in goal. So कहीं कहीं पे they have advantages, कहीं कहीं पे we have advantages. दक्ष भाई से क्या मतलब? खुशी दीदी कहाँ रहती है? अच्छा, ये तो नहीं होगा भाई. My dream now would be Kunde Bastoni swap deal. Araho से stopper, Araho as a stopper, Bastoni as a ball player, Christensen as DM. What do you think? I think offended goblin. सपने देखने अच्छे हैं. राइट नाउ मैंने जैसे बताया हुआ है, मैंने एक बार पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बार्सिलोना's wage to revenue is 80%. You have to offload, man.
a lot. And you have to, all the players that you're talking about won't be cheap neither in transfer nor in wages. So yeah, would I take DePaul? For whom though? Like if it's, I'll, the only scenario where I imagine a DePaul coming to Arsenal is when we lose Partey like that. So if we lose Partey and Elneny भी जा रहा है एंड सिर्फ जॉर्जिनियो को ही हम रिन्यू करते हैं, देन इट्स बेसिकली मिडफील्ड में कौन हो गया अपना, डेक्लिन हो गया and Jorginho ho gaya. Maybe one of Patino, but come on, man, he's not going to play six. So we're definitely in that scenario, maybe. But that essentially means that DePaul will be six and Rice will be eight, or whatever. DePaul will be eight and Rice will be six. But then what do we do about somebody like Zubimendi, right? Nobody will want to ride the bench between those three players, between Rice and Zubimendi and DePaul. तो कहीं ना कहीं हमें एक प्लेयर को तो जाना पड़ेगा यार. आई वुड टेक हिम बट आई डोंट नो मैन. Morata is out for 3 weeks. Yeah, I know. How can FDJ work with ETH if he becomes failure at United? Same like Van de Beek. Can't say. यार ये तो हमेशा रिस्क रहता है यार. हाई वैल्यू मनी, हाई पेइंग, हाई एक्सपेंसिव प्लेयर्स के साथ ये रिस्क तो हमेशा रहता है. Very few players over the price of 70 million really like properly work out. Jude has worked out. I would say Declan has worked out. I think those two would be it. Over 70 million, कौन से प्लेयर्स और काम करते हैं? पेपे फेल्ड, एंजो देखना बाकी है, काइसेडो a lot of people will say is failed. बहुत कम बिग मनी साइनिंग सक्सेसफुल होते हैं गाइस. तो रिस्क तो हमेशा रहता है. कैसे हो ह्यूमन बीइंग, हाउ आर यू? कैसे हो Zerato? Nice to see you again. Congratulations on the win yesterday. Without the Paul, Atleti will be. Huh, yeah, that's true. Okay, bhai. Sociedad are coming through in the attack. Shot and साइड से निकल गया डोनारूमा के. आंड्रे सिल्वा भाई अटैक लीड कर रहे हैं सोसिएडाड का. डाविजी हैज बीन सक्सेस टू ये. या in terms of output, I completely agree. I still think a lot of people are frustrated by him. Like, you know, the unanimous sort of success मैं जैसे कह रहा हूँ in terms of Bellingham and Rice, उस लेवल का सक्सेस डार्विजी है? That's a very good question, to be honest. PSG will win. अच्छा एक बात बताओ, if we sell Rafinha, then who will play in his place? Right now it's Lamine, 16-year-old every match. No. I don't think you should sell. I think you should sell Frank. Oh, PSG mess up. ताकि अरे भाई Sociedad aggressive press again. भाई PSG can't get out. Here comes Kubo. But निकाल लिया भाई, बॉल निकाल ली विटीनिया ने. Anyways, Sociedad have the ball again. Foul though for PSG. Bradley Barcola ने कर लिया. Darvizi has 25 GA this season is crazy. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. आउटपुट के टर्म्स में he's been amazing भाई. No doubts about it. I would love Darvizi. Anyways, आगे बढ़ते हैं guys. Vitinha gets the ball out. Mbappe loses the ball. Handball हो गई है against PSG. Selling Frankie after such a good season, maybe almost MVP, all other 10 players didn't turn up. I agree, man. But right now, it's a question of sellable assets. That's it. Timestamp, no timestamp, 11 goals. Ki. I will tell you though, 212, 213, 214, 215. Timestamp is not available, but if you ask me, I'll just tell you मेरे उसमें क्या. Yeah. Sociedad बड़ा confident लग रही है, boys. And again, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया कर दीजिए. Promise you, आपको बहुत अच्छा कर्मा मिलेगा. आपकी टीम अगला मैच जीत जाएगी. And I will be very grateful to you because channel grow karega. Frankie is not good, zero defensive awareness. I think if you put a defensive solid, like defensively solid एक structure डाल दोगे ना Frankie के पीछे, and you don't make him do the defensive work, just give him the ball, man. Because आजकल के midfielders have to impact the play by moving forward, यार. And किसी ने सही लिखा था ट्विटर पे that Frankie is one of those players that can impact the game without moving too much. Here comes Mbappe though. Mbappe plays to Barcola. बारकोला 3v1 हो गया भाई. दैट वाज ब्यूटीफुल ब्राइम, ब्यूटीफुल भाई. ब्रैडली बारकोला इज गोइंग टू बी एन इनसेन प्लेयर एज वेल. पीछे चली गई पीएसजी वापस. पेरेरा के पास बॉल है. मैं लाइक ना करूं तो सोच ले, मतलब अब सोच ले. फ्रेंकी विद राइस वुड जस्ट बी परफेक्ट. आई एग्री मैन. एफडीजे आई एग्री. फ्रेंकी वुड विद राइस would be perfect. Frankie with Rice and Partey,
would be unstoppable. PSG shaky लग रही है, सही कह रहे हो शान. Scoreline if Arsenal faces Bayern in the quarters, भाई. I think we will get our revenge. It's a tough team. They're the second most favorites. No, third favorite. नहीं. हाँ, actually bookies ने Bayern को second favorites करा हुआ है अभी भी. Crazy scenes. Real fourth favorites behind Arsenal, which is very surprising. Well, equal है दोनों का. उसके बाद PSG है. So the bookies have Man City as favorites, Bayern as second favorites, Arsenal and Real Madrid as equal favorites. उसके बाद and then finally PSGs and your Inters and Atletico. डॉक्टर सुयश भाई, हम ये स्टोरी 20-25 बार बता चुके हैं स्ट्रीम पे. सो इफ एनी मॉड कैन टेल हिम यार, बहुत अच्छा होगा. आई लव दैट सो मच. Won't start Frankie over Ode. I know, man. I completely understand. But sometimes we'll just need different solutions. That's it. तूने देखा है, like, when was the last time do you remember that Odegaard was benched, Renesu? मुझे लग रहा है कहीं ना देख, फिजिकली उसको वो पड़ने वाली है लात, ओडे को. और ये जो आरसीएम नहीं है हमारे पास, ये जो फाबियो वियरा की एब्सेंस है, कहीं ना कहीं हम पे खड़कने वाली है. तो Ode has played pretty much every game and he plays 90 minutes basically. Barcola comes through. Hakimi, अरे tries to play Mbappe, shot and छक्का मार दिया फाबियन रूइज ने. टाइम स्टैम्प वेदांग, अभी छक्का ही पड़ा है मेरे उस पर. तो आप कॉमेंट्री से थोड़ा समझ रहे. आई एम ट्राइंग टू बी एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल यार. बट 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8. There were two default teams you could choose. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes, that's basically it. Scoreline if Arsenal faces City in the quarters. Very tough, man. I don't want to say face City in the quarters. Two legs में City हमें हरा देगी, मुझे लग रहा है. One off में कुछ भी हो सकता है. Two legs में वो हरा देगी हमें. अगर हमने City को वापस वेम्बली में खेला, it will be poetic, man. Imagine City versus Arsenal in the final again. At Wembley. The first game of Arsenal season and the first game of City season is the closing curtain of both our seasons. Community Shield Arsenal जीत गई थी. क्या चैंपियंस लीग भी आर्सेनल जीतेगी? बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा मुश्किल है. You have a feeling? Oh, Mbappe is through. Mbappe saved, भाई, saved. भाई, he was through 1v1, man. Just through 1v1. अब आइए PSG भी थोड़े फॉर्म पे यार. They're moving the ball really well. लुइस एनरिके ने सेकीपन हटा दिया भाई. डेम्बेले tackled out भाई, tackled out. Like this stream, everyone, of course. What happened to Delict, bhai? Few years back, people used to say generational CB talent. Just fell out of favor, man. At Juve, he was a part of a declining squad. जो नहीं चल रहा था, उसके बाद यूवे पे आपको पता ही है क्या सैंक्शंस भी लग गए, मैच फिक्सिंग वाले, मतलब whatever, you know the sanctions that Juve got. And then उसके बाद, you know, and especially again under Pirlo, वो अच्छा नहीं कर रहा था. And now he's just out of favor by under Tuchel, man. So that is it. How would Ben White handle Mbappe, भाई? It would be crazy. But Mbappe के लिए मेरे को लगता है हम एक इतना डिफेंसिव स्ट्रक्चर करेंगे ना. PSG versus Arsenal is something I don't want to see. They have the perfect counter against us. That is Kylian Mbappe. एक फास्ट प्लेयर जो फिनिश करता है, ठीक है. दे हैव ज़ेर एमरी जो क्रिएट भी करता है. ओह, ये देख. द थिंग इज, द सेकंड यू लूज द बॉल अगेंस्ट PSG ना, ये डेम्बेले और Mbappe भैंस के यहाँ कितना भागते हैं भाई, फट जाती है यार, जेन्युइनली. Kubo, yes, though. Kubo has been really good. मॉड्स ही मॉड्स हैं चैट में, इतने मॉड्स हैं. हाँ, हो भी सकता है, टू बी ऑनेस्ट. नहीं यार, इतने डाले नहीं है. इट्स मोस्टली गोइंग टू बी मेंबर्स यार. बट यार सलीबा, दैट्स द थिंग, मैन. हाउ मच विल यू ट्रस्ट सलीबा? आई मीन, यू ट्रस्ट सलीबा, बट सलीबा पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दोगे तो क्या होगा? वही कह रहा हूँ यार. आर्सेनल की, ओह कूबो, नाइस टच मैन. आर्सेनल की बेस्ट चीज ये है दैट वी हैव फाउंड डिफरेंट वेज टू स्कोर, स्पेशली फ्रॉम सेट पीसेस एज वेल, मैन. Sociedad look like a defensively solid side, yeah, but PSG is getting back, yeah, behind them bar. Especially this midfield area. But ये Fabian Ruiz ये नहीं संभाल पा. Look at Mbappe again. फिर से Zaire Emery is rushing forward, भाई. Mbappe plays to Dembele. अरे टच कंट्रोल नहीं हुआ बेचारे का यार, भाई. क्रेजी प्रेस, बट PSG निकाल रही है भाई. PSG निकाल रही है. ट्रेसी को हटा दो. भाई ट्रेसी तो इज इररिमूवेबल भाई. ट्रेसी इज इररिमूवेबल. डेम्बेले
काट दिया, काट दिया, टेक्स अ शॉट, ओ क्लियर्स भाई, क्लियर्स, अभी अम्बापे पे बॉल पहुंचने वाली थी. Chelsea set to appoint Josh Marsh as loan manager. Recruitment of Swansea head of football operation led by CFC sporting director. Chelsea ने signing कर ली है guys. They have hired Josh Marsh as the loans manager. कुडी चीनी के साथ जो टेक्निकल कोच है उनके साथ काम करेंगे. अम्पे पैल भाई, अम्पे पैल भाई, गुड सेव यार. कौन है इनका कीपर? हु इज हु इज सोसिएडाड्स कीपर? भूल गया मैं. रिमेरो. ओ हाँ, एलेक्स रिमेरो है. क्या हाल है भाई गेम का? बढ़िया चल रहा है गेम यार. अभी स्टार्ट तो स्ट्रॉन्ग किया था सोसिएडाड ने, बट पीएसजी प्रेस इनवाइट करके पीछे खेल रही है उनके. नाउ लेट्स सी कैसे काम डाउन करती है भाई. जुबी वॉच भाई, जुबी मेंडी वॉच, लेट्स गो. फाउल, फाउल नहीं है. उफ. गुड नाइट प्रतीक, गुड नाइट, गुड नाइट. आई थिंक आर्सेनल कैन डिफीट रियल मैड्रिड. यार कल if anything yesterday teaches us ना, Madrid can be playing suboptimally with so many players missing out. They will figure out a way to score, and they could have scored two yesterday. They could have scored two yesterday very easily. एक विनिशियस का मिस हो गया था, बट ब्रहीम वगैरह कोई ना कोई निकाल लेते. And this was without Jude, man. This was without Jude. I don't think we can beat. Right now it's a bit too early. One off game में कुछ भी हो सकता है. One off game में कुछ भी हो सकता है. Two-legged ties very difficult. Romero got his first pink call up last break. Insane. Yeah, man, I think he's a decent keeper actually. Anyways, Donnarumma. फिर से बिल्डअप करिए. आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फीलिंग दैट डिलिक्ट विल लीव बायर्न इन द समर. ही ही इज नॉट प्लेइंग मैन. आई थिंक वो मूव कर भी जाएगा. एंड आई थिंक ही माइट एक्चुअली मूव टू मैन यूनाइटेड. लॉन्ग बॉल प्लेड टू अम्बापे. ओ ऑलमोस्ट कंट्रोल भी कर ली थी यार किलियन ने. भाई ही इज सच अ डेंजरस प्लेयर मैन. ही इज सच अ डेंजरस प्लेयर. Hey, actually, man, Killian is bloody generational. Bloody generational. Good night, Sleepy G. Madrid has the knack of scoring goals. Yeah, that's true. Brahim became Messi in That was an insane goal, man. That turn, that hold up, that finish, actually Messi-esque. Arsenal can go all the way till the semis. Let's negotiate this Porto game first, man. ये ड्रगाओ वाला गेम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला. मैं अभी से बता रहा हूँ. अल्लाह हाफिज भाई सभी खान. Take care of yourself. Tuchel is going to Barcelona and Mourinho to Bayern, I feel. Bhai, I don't think Tuchel will move. Why will he move, man? Well, I can understand, but this will be like you sacked Flick for Nagelsmann, then you sacked Nagelsmann for Tuchel. आपने मतलब 3 कोचेस में ऐसे कर लिया एंड देन कुछ भी नहीं हुआ. When will the match start? लॉल. मैच चल रहा है भाई, मैच चल रहा है. Delict is injury prone. If any club will pay 70 for him anymore. Yeah, that's true. डेम्बेले फाउल नहीं हुआ है. हियर कम सोसिएडाड ऑन द अटैक. काटने को कोशिश कर रही थी. हकीमी भाई टू द रेस्क्यू. भाग रहे हकीमी. They can't find that final ball यार to their forwards. That's the issue with PSG. खैर ये फाउल तो नहीं था. डेम्बेले विड्थ पे, हकीमी इन्वर्ट करते हुए अंडर से अंडरलैप कर रहे हैं. हकीमी को बॉल नहीं मिल पाई एंड एलेक्स रोमेरो कलेक्ट वेरी इजीली. People are angry with Bayern at Tuchel. भाई वो तो करेंगे. They were angry even when they won the title. ठीक है. The guy has just won the Bundesliga in the most dramatic fashion last year. And the board did not give him the signings he wants. मुझे तो लगता है कि नहीं होगा. I don't think he'll be sacked. Dembele L counter 2. हाँ सेड आप ये चलाते हुए रहो पूरे गेम में. रेनिसो सैक हुआ नहीं हुआ. He's a dribbling merchant but he can't pass to save his life. By almost what a ball by Romero यार. बिल्ली मार दिया किंग के घर के बाहर. इफ यू रिमेंबर दैट 7 डेड कैट कर्स. अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार. ऐसा कुछ नहीं होता. बायर्न वाली गेम में कोई स्कोर बता दो क्या है. अगर किसी ने देख रहा है वो, कोई देख रहा है वो गेम, किसी ने देखी है वो गेम तो. स्टटर क्यों कर रहा हूँ जितना. जस्ट टायर्ड एक्चुअली. Jose Mourinho next club. I think he's waiting for Chelsea. I think he's waiting for Chelsea.
I say 2-1 win for Arsenal in leg 1 where we'll be having 2 goal lead and bottle the clean sheet and sweat for the last 10 minutes. Bhai, if we end up winning at the Dragao na, that round is 80% done. Dragao is going to be one of our toughest fixtures away. At least at this point this season तक. हमने एनफील्ड किसी तरह नेगोशिएट कर लिया, ड्रॉ निकाल लिया, ड्रागाओ पे ड्रॉ निकाल भी आया तो अभी अच्छी बात है. Donnarumma used to be a really good player. I know, man. God knows what happened to him. He was such a high prospect. Here comes Sociedad. Kubo को बॉल नहीं मिली, हैंडबॉल लेकिन हो गया है ब्रैडली बारकोला का. Yeah, man. Milan में he was so highly talented. Then he left for PSG. Crazy. 0-0. Thanks, Tracy. Kai Havertz is better than Dembele. I agree. बेचारे रेनुसे के पीछे पड़े रहते हैं सब. भाई रेनुसे इज अ क्यूटी पाई मैन. द क्यूटी पाई ऑफ द कम्युनिटी. Fabio goal against Porto भाई and then his dance. You seen his dance ना? जब वो 30th टाइटल जीती थी पोर्टो, वही वाला डांस होगा. भाई नींद आ रहा है बट यूसीएल क्या ही करे परमप्रीत. वी आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद यूसीएल राइट नाउ. टॉप 5 ओवररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन. यू नो व्हाट यू गाइस टेल मी एंड आई विल से हाँ या नहीं. ये क्या सेट पीस चल रहा है. ये क्या बढ़िया सेट पीस चल रहा है. ओ हाउ डिड दे नॉट फिनिश. अरे इज दैट ऑफसाइड. वाज दैट ऑफसाइड. भाई पीएसजी वाज सो कंफ्यूज्ड भाई. नो इट वाज ऑन साइड. ओ फिसल गया भाई. फिसल गया या फाउल हो गया था मार्किनियोस पे. भाई दे शुड हैव फिनिश इट मैन. या ईशान का क्वेश्चन आंसर करिए भाई. टॉप 5 ओवररेटेड प्लेयर्स. ऑलराइट ही स्टार्ट्स विद डोनारूमा फर्स्ट. ऑलराइट. Yeah, I think Donnarumma is one of the overrated ones now. Donnarumma is genuinely one of the overrated ones. Dembele, Usman Dembele, fair enough, fair enough. Is Rashford overrated or properly rated? What do you think? Cavani, Renato Sanchez. Cavani, I think, is properly rated, man. I don't think he was ever overhyped. Renato, for sure, for sure. What about Rashford? What do you guys think about Rashford? I think ये बड़ा interesting question होगा. क्या ही फर्क पड़ता है पोर्चुगीज में चिल्लाएंगे समझेगा तो ना. Caicedo, Raghav. The Caicedo at Brighton was really, really good. I think his Chelsea spell has just ruined everyone's impression. Kubo, फाउल मिल गया है सोसिएडाड को. एंटनी. रैशफोर्ड इज सीजनल आई फील. भाई आम थोड़ी है वो. कैसे है प्रज्ञान. जैक्सन, लिंगार्ड. नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं. A harsh one, but Ozil is a bit overrated. नहीं यार, prime Ozil was a beast, man. I think इसका एंड आप कह सकते हो मे बी, बट नहीं यार. Here comes Sociedad again. बॉल कंट्रोल नहीं हुई फिर से. PSG will be out of it भाई. भाई बड़ा पिंग पोंग सा गेम चल रहा है. इस पे कुछ कंट्रोल नहीं है किसी टीम का. अगर आर्सेनल ऐसी गेम खेल रही होती ना, आर्टेटा गुस्से से पिघल चुका होता अभी तक. इतना पिंग पोंग नहीं खेलना है हमें. ESR, हाँ ESR I agree man. I think it's a bit too much for him. Mudrik. I just think Mudrik is bad. I don't think he's overrated. He's just bad. Sterling, I think honestly, I think Sterling is underrated. I think he gets disrespected way too much. By he's City's one of top City's का top goal scorer है. As a winger, one of the highest scoring wingers for City. भाई वो 18 साल की उम्र पे लिवरपूल में शाइन किया था, फिर वो सिटी गया. And he had a fantastic career with them. Yes, he's wasteful, man. That doesn't mean he's bad. I think he's slightly underrated actually. Pep made him look good. Bhai, I am telling you, no winger at City has the impact that Sterling has. Here comes Kubo, bhai. Kubo, wow. Kubo! Orre, yaar, this Kubo fellow, man. Yo. 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 Mitoma, Araujo, Palmer and Lisandro, he feels are overrated. All right, Renisu. Araujo overrated. Good players goes to Chelsea and becomes overrated. Nah. I think they just become bad now. मैंने क्या बताया था? Environment matters a lot. By many people are saying to sell Rashford this summer. We cannot change everything. Rashford has more than 200 GA for United. Yeah. At some level, you'll have to move past him, man. Oh, beautiful, yeah, Bryce Mendes. Ball went a little wide. Cross comes in. It should go out. No, it won't. And corner for Real Sociedad, bhai. Ansu Fati. Okay, Ansu Fati.
Araho, what the fuck, says Swandeep. Yeah, yeah, but it's an opinion, man. It's okay. Everyone can have opinions. Do you think PSG UCL run can be crucial for Mbappe to Real Madrid saga? Yeah, yeah, I said it that if PSG get eliminated in this round, I think he'll push for a move even more. Kubo takes that corner. कैसी डिलीवरी बकवास तो नहीं थी फर्स्ट मैन लेकिन बीट नहीं कर पाया. हियर कम सोसिएडाड अगेन भाई. अच्छा खेल रही है सोसिएडाड, लेट्स बी ऑनेस्ट. फाटी इज स्टिल यंग. 200 G in 8 years is not good though. But yeah, he started his career way too young, man. He started his career way too young. Foul किसको दिया है? Oh, offside. Arda Guler. It's too early to say. Kubo is amazing, bhai. Kubo is amazing. Kai Havertz overrated? Maybe. देखो यार, मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि आर्सेनल का कोई प्लेयर ओवररेटेड है, सो मैं तो नहीं कह सकता. गुंसालो रामोस, आई थिंक उसको वो ही नहीं मिली है यार, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उतनी. पीके इज ओवररेटेड says देवेश. डैम. ब्रूनो इज ओवररेटेड says आरुष. ओके. ब्रूनो, I like PK and Bruno both. Felix, I can get on board with that. Yudaksh, I'm watching the Bayern game. अगर उसके spoilers ये चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा, चलेगा, चलेगा. Musa Diaby, no bro, no hate, a beautiful playmaker, but his cult following is too much hypes him. I think everyone has that sort of PR, man. Havertz is perfectly rated, absolutely, yeah. I think so. I think sometimes the fans overrate him a bit, our fans, but I think कौन से club का player नहीं believe, कौन से लोग अपने player पे believe नहीं करते. Even when Hazard was at Madrid, everyone was like, I wish he becomes better, I wish he becomes better. Like, look at the love João Felix gets at Barcelona, right? I don't think João Felix is that good anymore. He was great at Benfica. He was great at his first season at Atleti. But I think उसके बाद से क्या ही हो गया उसको. Daksh is overrated. Fair shout, bhai. Fair shout. Enzo is overrated. I think it's a bit too early. Guler has been injured. Foden, I agree. Overrated player, bhai. Foden तो बड़ा overrated है. So said Daddy. Okay. Guys, 100 people are still here, man. A video like kar do. Subscribe if you're new. We are at 165 likes, if I'm not wrong. Yeah, 165 likes. The likes haven't moved in a while. So I'll really appreciate अगर आप 5 10 करके likes बढ़ा दो. Let's try and get to 175 likes. क्योंकि the target is 300 likes for this stream. So अभी पहले 170 करते हैं. 300 भी पहुंच जाएंगे. Sociedad are playing around in PSG's box. PSG के players आ रहे हैं. Kubo is again 1v1 with Danilo Pereira. कैसे negotiate करता? Beautiful cross and Silva. ओई, सिल्वा था कौन था? आंड्रे सिल्वा ही था. Baru then Felix couldn't live with the pressure of being a 100 million player. I think he started believing in his own hype a bit too much. Arsenal equals 7. Message is clear, of course. Lazio close. भाई, imagine if Bayern loses the first leg, man. मैं जिस घर पे काम करता हूँ ना, like I take care of the kids and all, they are diehard Bayern fans. Even they, for the first time, were not confident of Bayern winning, which is crazy. You think Pascal Gross is heavily underrated? Yeah, I agree. I think Gross is a great player, man. I think Trossard is massively underrated. A lot of people now have started taking notice of him, but he's very underrated. By Sociedad ने again cut it out, man. Brilliant खेल रही है Sociedad यार. बहुत बढ़िया खेल रही है Sociedad. Would you take Dembele for a sack? No chance, bhai. It's going to be that same situation, like look at our left backs. Timber, ACL, Zinchenko, Tomiyasu. तीनों left backs गायब हैं. And we have to play a center back at left back. We don't want that situation कि साका का अगर अब बैकअप के लिए agree भी कर लेते हैं Dembele. Don't want a situation here. Sociedad through Silva. Bhai, Danilo Pereira. Beautiful, man. And so we don't want a situation where Saka's backup is more injured than Saka, right? How's your favorite local club in Ireland performing? Yeah, season is starting here this Friday. Bohemians play their first game. Good news for Bohemians is उनका stadium reconstruct होने वाला. So this is the last year at the stadium and redevelopment होगा stadium का. So बहुत अच्छा होगा. David Raya is underrated. I think agreed. Trossard is very good. Agreed. Agreed. I wanted Trossard at Barca as that LW. Edison is underrated. Okay, fair enough. I think Edison is actually properly rated, on the cusp of being a little overrated, but that's my opinion. That's my opinion. I was expecting a tight game, but both teams are playing very loosely, says Akshaj. हाँ यार, दोनों टीम्स का लग रहा है ऐसी गेम बिल्कुल PSG को ही फेवर करेगी, जहां पे Mbappe will be broken through.
हियर कम्स डेम्बेले दो, डेम्बेले ड्रिबल कर रहा है, नहीं पहुंची बॉल, फिर से एम्बापे ट्राइज टू गेट द बॉल, गेट्स द बॉल, प्लेज इन बारकोला हु मिसेस द बॉल एंड फिर से टर्नओवर हो गया पोजेशन में. मेरे हिसाब से सोसिएडाड विल बी हैप्पियर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक. उन्होंने कंसीड नहीं करा. दिस गेम इज एट पेरिस. सोसिएडाड विल बी सम कंप्लीटली हैप्पी विद द ड्रॉ टिल नाउ भाई. बायर्न इज स्लो. Ake is very underrated. I agree. KVR is underrated. Yeah, he's just not gotten the opportunities. That's his problem. I don't even know how to rate him right now. Please continue Know Your Creator again with Baba. Yes. KYC comes in with next international break. Next international break aane wala hai. So when I'm back from London, I will wrap up. I will possibly have a episode or two of Know Your Creators out. Ruben Diaz this season feels a bit out of shape, not overrated. Huh, he's just been out of form. You can just say that. Guys, 175 likes ho gaya. Thank you so much, yaar. Let's now move to 185. Let's now move to 10 more likes. Guys, again, Dembele is through. Dembele! This guy, man. भाई एल काउंटर कौन कर रहा था? सिड कर रहा था ना. सिड एल काउंटर में एक और जोड़ दे भाई. He was offside anyway. He was offside anyway. But what a miss. Now it looks like younger Michael Fassbender. Fair enough, भाई. Good shot. डायबाला भाई, डायबाला का तो अलग ही सीन है यार. समटाइम्स आई फील इज अंडररेटेड, समटाइम्स आई फील इज ओवररेटेड. Cancelo is overrated, trust me or not. It's just his overlapping runs that get all the hype. Yeah, I think Cancelo is really good at a couple of things that nobody else can do. But I think he's also sometimes a defensive liability. But that's just my opinion again. Fede is getting unnoticed. Player who beats Fede midfielder gets a shot. Agreed, bhai. Fede is and will probably always be outside of Real Madrid, will always be underrated. Mbomo is underrated Brentford player. I agree. I think टोनी की एब्सेंस में उसने काफी अच्छा संभाल लिया था. ये गेम यार एक बड़ी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है. अंबापे 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 नहीं हुआ भाई. दो लोग चढ़ गए उस पे. इट्स बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक. जावी गालन पे फाउल होना चाहिए वो तो यार. दैट शुड बी अ फाउल. Cancelo is very talented. I agree. Cancelo is very talented. It's just that Cancelo's skill set is so niche that there are some things that only Cancelo will do the moment he gets that opportunity to shine. But sometimes I feel defensively he can be a liability. Sometimes. Again, that is your opinion. Cancelo is closer to Trent than let's say someone like Hakimi. Yeah, in a way that's true. I think Trent is a generational fullback profile though. I think ट्रेंट के लिए मेरे हिसाब से देयर इज नो कंपैरिजन विद ट्रेंट विद एनीवन. आई थिंक ट्रेंट इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. I want Mbappe out so that he join Real Madrid as soon as possible. Rizwan, I think यार 5 साल का ये सागा चल चुका है. ठीक है, Real Madrid and Mbappe वाला. I think people should move on from now. Like if Mbappe had to move to Real Madrid, he would have, but he always comes up with an excuse, or he ends up signing a new contract. So I don't know what the scene is. By sometimes he wants that loyalty bonus. Sometimes his mom is being an issue. So let it be, man. I think Real Madrid should move on. There are plenty of attackers you can go for. Plenty of very talented attackers you can go for. Like Edward Nketiah. You know, Real Madrid should go for somebody जो willingly उनको join करेगा and अपना heart and soul play कर देगा. So किलियन अम्बापे को छोड़ दो, एडी एंकेटिया पे नजर मारो guys. He is England's under 20 record goal scorer. कहाँ मिलेगा आपको ऐसा player, right? So क्यों अम्बापे के चोचलों पे पड़ते हो? आपने देखा अभी तक उसने एक भी गोल नहीं मारा है. एडी एंकेटिया ने मारा हुआ है चैंपियंस लीग में गोल. सो या Mbappe is waiting for Arsenal. Yeah, man, let us take that headache, you know. Let us take that headache. He's missing chances. The defenders who can pocket Mbappe. There is one in Arsenal called William Saliba, bhai. That's it. Mbappe is the perfect example of भाई तुम चले जाओ मम्मी नहीं मान रही. That's true. दक्ष भाई कभी कभी मस्त जोक मारते हैं. I am an underrated comedian. That to be honest. My Discord thinks मैं बुरे jokes मारता हूँ. I am an underrated comedian. Let's be honest. Telling you, man. कितना पीछे 5 साल का सागा है ये. Walker would eat up Mbappe. You're not a bad shot to be honest. Yeah, man. Parampreet, मैंने सुना. My thoughts. Legend of the game, man. Will be very surprised if he does not retire. And if he does not retire, where does he go? भाई पूरा राइट पे कुबो खा लिया यार. देखा करो तुम लोग. Nobody said Sancho is overrated, भाई.
Yeah, I think Sancho was overrated for a while at Dortmund. अब ही वाज गुड एट डॉटमंड, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट यूनाइटेड पे आने के बाद उसकी हाइप की तो पहुंच ही नहीं थी. एवरीवन वांटेड सांचो फ्रॉम गोल्ड ब्रिज टू यूनाइटेड फैंस, एंड देन इट ऑल टर्न्ड इनटू क्रैप. I can't believe at some point people were saying that Sancho is a bigger talent than Saka. I never believed that. I always felt, arre, what a terrible Berenshia, bhai. What a terrible control by Berenshia. ये क्या था? पैर. Come on, brother. Uh, if Tomiyasu can eat Salah, then Tomiyasu can eat Mbappe also. But Tomiyasu fit रह जाए. Or at his best, he can do whatever he wants. PSG are being outplayed. I feel both teams are being super wasteful here. There are some moments जहाँ पे Sociedad look incredible, but I think PSG have also had that moment, that Dembele chance, that Mbappe chance. I mean, a couple of chances, man. Both teams though super. It's like a ping pong game, man. किसी भी एक एंड पे नहीं रुक रही है बॉल, बस चले जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है. ईट ईट मत करो, भूख लगी है. Bayern is playing Barca-esque tonight. So slow, contained, but passing. So like 1,000 passes वाला खेल रही होगी most likely. Anthony is underrated भाई, बाप रे. Hmm. I think Real Sociedad is missing the best Scottish player. Unfortunate that Tierney can't play this leg है, but next leg में वो खेलेगा. Feel Militao is overrated. I think Militao is one of the best centre backs, man. He has a perfect mix of pace and strength. Like he's like a taller Lisandro Martinez without the careless tackles. Just his ACL, man. His ACL is made up of biscuits. Goats and Higuain are overrated. Don't ask me why. Okay, okay. I think Higuain nahi. Higuain played his roles perfectly at Real Madrid and then Juve, then Napoli. Napoli Higuain तो भाई क्या बोल रहे हो? Napoli Higuain तो भाई killer था. Which international team do I support? I support Brazil, यार. Offended Goblin. I support Brazil. Fully in with the Seleção, man. कोबी मेनो अंडररेटेड. कोबी मेनो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है. अब लोग उसको जेनरेशनल बोलने वाले हैं. वो मेरे को लगता है थोड़ा सा ओवर रेटिंग हो गया. ही इज गुड मैन, बट जनरेशनल प्रॉस्पेक्ट्स एक बड़ा लूज टर्म होता है. जनरेशनल प्रॉस्पेक्ट्स आर फैब्रेगास, जावी, इनिएस्टा, इवन विल्शर फॉर दैट मैटर, डाविड सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा. ये मिडफील्डर्स होते हैं जनरेशनल भाई. कोबी मेनो हैज अ लॉट टू प्रूव. द लास्ट ट्रू जनरेशनल प्लेयर who at a young age played for Man United was Wayne Rooney. That is the last generational player that played for Man United. Yes, Lamine Yamal is generational. Gavi, Gavi is an elite level talent, man. But are you literally telling me that Gavi is at the same level as Javi and Iniesta in their prime? Come on, bro. I'm telling you, generational is being overused way too much. जनरेशनल मतलब मेसी रोनाल्डो वाले होते हैं यार. ठीक है, मतलब एक एरा डिफाइनिंग प्लेयर्स. मेरे को लगता है लमीन हो सकता है उनमें से एक, जूड हो सकता है उनमें से एक, बट बियॉन्ड 2-3 प्लेयर्स नहीं होंगे. पॉगबा वॉज अ जनरेशनल टैलेंट बट डिड नॉट. या आई एग्री. आई थिंक फैब्रिगास ऑल्सो. आई थिंक फैब्रिगास भी एंड में बारसा जाना नेवर रियली वर्कड आउट फॉर हिम. आई थिंक ही वन हिज ट्रॉफीज यार. ही वन वट एवर ही वॉन्टेड टू विन, बट आई डोंट थिंक ही एवर लिव्ड अप टू हिज कंप्लीट पोटेंशियल. चेल्सी में भी ही वन हिज चैंपियंस लीग या प्रीमियर लीग, जो भी जीता था मुझे नहीं पता. हियर कम्स सोसिएडाड दो, कुबो काट, दो लोग चढ़ गए उस पर. या आई थिंक फैब्रिगास भी डिड नॉट एवर. पेड्री नहीं मैन. अगेन सी वॉट एव आई सेड, आई एम नॉट इवन सिंग कंपेयर टू मेसी रोनाल्डो बिकॉज ऐसे तो कोई भी नहीं होगा. आई एम सिंग इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर मिडफील्डर्स, कंपेयर विद पेरलो, कंपेयर विद जावी, कंपेयर विद इनिएस्टा. ठीक है, De Bruyne could be definitely one of those players, like a top world class talent. Mbappe भाई निकाल गया Mbappe. फाइंड द बॉल भाई. Mbappe फिर से काटने को कोशिश करे. कॉर्नर फॉर PSG. um Fabregas assist against Burnley for Chelsea. I remember that chipped ball. I think it was that, no? बहुत beautiful थी. और are you talking that driven pass जो था ग्राउंड से गया था? भाई Fabregas की बहुत बड़ी असिस्ट है. Payet nahi man. Payet was a flash in the pan kind of player. Good 4-5 seasons. Does not make a generational talent. Fabregas is much better than that.
Klopp called Nelly once a generational player. I agree. I think Nelly again. I think Nelly right now has hit a wall, and the second he breaks that wall and he figures out to be a more lethal winger slash striker, he'll end up becoming generational right now. I think Martinelli and Saka की सबसे बड़ा drawback ही यही है that they um these two are not aesthetically pleasing. Like look at Mbappe's dribbling, look at Kubo's dribbling. It looks aesthetically pleasing. Yeah, I think Lewandowski is a once in a lifetime sort of striker, man. Once in a lifetime sort of striker, Lewandowski. Kane भी, Kane भी to an extent. Son भी बहुत, but he's not generational talent. He's a elite level talent. Generation बड़ा यार. Oh, बच गया भाई. बारकोला ने head up. According to you, who's the world's best player right now? Kevin De Bruyne. I'm not saying because you're a City fan, but I genuinely think if I had to have one player to play the game of his life to save my life, it would be Kevin De Bruyne. Kubarsi feels so good as a CB right now. पता नहीं यार, like I've gotten mixed reviews. Um, like Sadiq Bhai is convinced that Kubarsi will never amount to more than a Sergi Roberto. And usually Sadiq Bhai's eyes are very good. I don't watch Kubarsi as much, so I will not know. Mbappe or Salah. People don't realize how it is difficult to come to fourth division, hit 10 goals in the first season. भाई fourth division की बात कर रहे हैं हम यार. A guy, भाई 17 साल की उम्र में यू आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री. 17-18 साल की. ओ भाई, व्हाट अ रन यार. व्हाट अ ब्यूटीफुल रन बाय डेम्बेले. Coming to a new country at a broken club and you're leading them with one of the other wingers, man. Crazy scene. But yeah, Dembele is a dribbling merchant, man. He has such good close control. Just has terrible eye for pass and terrible eye for shooting. Gavi can reach the levels. Is he there right now? I don't think so. I saw a lot has to be seen when Gavi comes back from injury. Also, Gavi was starting for Barca at 16, so I think he's any different from Lamine. Oh, भाई बहुत गंदा फाउल. Like think injury हो गई है यार. No. I completely agree. He started very young. Both Pedri and Gavi started very young for Barcelona. But I think it was more circumstantial than anything. I think at that point of time, Barca needed center midfielders, Zada. But you can say, to be honest, he sort of broke through anyway. Look, time will tell. But I still think Javi Iniesta का level तो यार कोई achieve नहीं कर सकता. Davies के बारे में thoughts. Very confused about Davies always. I don't know if he's a speed guy. I don't know if he generally knows how to attack या फिर क्या scene है. I've always been very confused about Davies because Davies का एक गेम से दूसरे गेम तक बड़ा डिफरेंट लगता है. Some games में he's unplayable मेरे हिसाब से. So yeah. बोर्ड देने की उम्र में बारसा में खेल रहा है. सोचो भाई, सोचो. भाई मैं सोने जा रहा हूँ. गुड नाइट सेट. तेरा एल काउंटर रह जाएगा लेकिन यार. Kubarsi 16 needs to give him time. He can either be Roberto or PK. No in between, however. But being a Sergio Roberto is not bad, you know. I mean, of course, every Barca fan feels वो standard पे नहीं है. He's not at the standard of Barcelona. But यार Sergio Roberto जितनी longevity किसी की थी. किसकी थी Sergio Roberto जितनी longevity? I don't think किसी की थी. The reason Barca players are starting at 16 is because मैं वही कह रहा हूँ. Is it that see Xavi Iniesta they started a little older. But when they started, they were there. They were not only great talents, but they were also durable. Injured नहीं रहते थे. Always available. PSG free kick, header, पीछे बैक पोस्ट पे कोई नहीं पहुंच पाया. And so, yeah, is it that circumstantial that Pedri and Gavi have started and they've been forced to grow up? Or are they so good that they have had to Dembele? Beautiful ball, पीछे खेल दी वापस. क्रॉस जाएगा, क्रॉस गया, क्लियर्ड आउट, नहीं हुआ. विटीनिया हैज द बॉल. बारकोला को खेल दी. बारकोला क्रॉसेस द बॉल टू मार्किनियोस बट नहीं पहुंची. जावी डेब्यू एट 18. या सो he broke through, man. He broke into that squad. I don't know, man. Javi and Iniesta, crazy talents. Respect Roberto. Exactly, man. यार उतना longevity वाला करियर बहुत कम ही लोगों का होता है यार. And there's a reason some players play. Like, I think Xhaka को देखो आप. Xhaka
at Arsenal was disrespected, and to an extent, rightly also disrespected. He wasn't that good in his starting years, but then he became so indispensable towards the end. Na? There was a reason every manager wanted to play Xhaka because he was always available. He was always available. And that's it. बिफोर आई गो, आपने जावी का रिपोर्ट कार्ड देखा है जो लमासिया में देते थे? नहीं यार सेठ, मैंने नहीं देखा। किसी के पास हो तो मेरे को ट्विटर पे टैग कर देना यार, मेरे को देखना है वो क्या है उसमें। ट्रेंट इज क्लोजर टू केडीबी मोर देन एनी आरबी। या मैन, आई थिंक ट्रेंट इज एन एलीट, इज लाइक यूनिकॉर्न प्रोफाइल मैन। ट्रेंट ट्रेंट जैसा राइट बैक बहुत कम ही मिलेगा हमें कहीं जिंदगी में। कैन अराहो पॉकेट अम्बापे? या देखो, आई लाइक अराहो। Can he pocket Mbappe? I think very few CBs can pocket Mbappe. It's a task for Saliba also. अब मैं बोलूंगा हाँ ही कैन पॉकेट अम्बापे, तो दो तीन मैड्रिड फैंस आके बोल देंगे भैया ही कांट पॉकेट विनी, तो अम्बापे को कैसे करेगा? Which to an extent is true, man. Like Vinny sometimes get the better of Araujo, and Araujo has to resort to fouling Vinny a lot of times. मैंने टैग करके पिक पोस्ट कर दिया ट्विटर पे। थैंक यू सो मच हीरो, मैं बाद में देख लूंगा। जाका इज बॉलिंग एट लेवरकूसन, आई एग्री। He had this interview, man, with this, I think, players. So, ओह भाई, मेरे को लगा निकल गई थी पीएचजी। यार गेम थोड़ा डेड रबर हो गया मैन। एक मोमेंट ऑफ मैजिक चाहिए, क्या कूबो पहुंचा सकता है यार? कॉर्नर अगेन टू रियल सोसिएडाड। मुसियाला का मिस हो गया। सलीबा इज ऑलरेडी पॉकेटेड अम्बापे। आई नो, बट मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट बेसिस पे, right? There's so many times I remember Mbappe also got the better of Saliba. But yeah, I remember those games जहाँ पे उसने भी करा है. Only CB is capable of dealing with Mbappe right now is VVD or Saliba. I think so, man. I think VVD much more, but I think Saliba को भी you can't sleep on him. I don't think Gabriel can deal with Mbappe. Gabriel is a rash tackler. ओह, मुझे लगा पहुंचने वाली थी भाई। ग्रेट सेव डोनारूमा मैन। 9 में से 2 गेम्स विनी ने अच्छा किया, एंड आई थिंक दैट्स पॉकेटिंग बाय अराउ। अच्छा ठीक है भाई, you guys know better. Like I said, I just started watching La Liga recently, and in the games I watched, Vinny has done really good against him. Walker would deal with him. Walker will match him. Dealing with him is a different thing. Maybe Mickey Van de Ven का देखना पड़ेगा. Mickey Van de Ven in the Champions League will be an insane player to watch, to be honest. Mickey Van de Ven versus Mbappe would be crazy. Here comes Kubo भाई. Kubo. Cross. अरे आंड्रे सिल्वा ने ट्राई किया बाइसिकल, बट कुछ नहीं हुआ। सोसिएडाड स्टिल हैव द बॉल। जाका और गैलेगर, गुड शाउट। यार जाका ओल्डर है, बट आई स्टिल थिंक जाका मैन। डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट टीम मैन। फॉर आर्सेनल जाका 100%। फॉर स्पर्स, अगर स्पर्स को लेना होगा तो गैलेगर इज द गाय दे नीड, नॉट इवन इफ जाका वाज अवेलेबल एंड देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हियर कम सोसिएडाड, मार्किनियोस नहीं संभाल पाया। सोसिएडाड आउट ऑफ प्ले चली गई बॉल। गोल किक। भाई बेरेंचे बड़ा हग रहा है आज यार। AWB has pocketed Mbappe ने, that's true actually. AWB डिफेंसिवली इज अ वेरी सॉलिड प्रोफाइल। हाँ, ऐसा प्रोफाइल आपको डिफेंसिवली बड़ा कम मिलेगा। जाका इज 10x द प्लेयर ऑन द बॉल देन गैलेगर, एग्जैक्टली, बट इट डिपेंड्स ऑन द टीम ऑल्सो यार। स्पर्स में मेरे को नहीं लगता जाका का कुछ काम है। दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पीपल देयर। They need runners, man. They need those physical runners. Xhaka is a slow guy, but he's a control freak. I think Trippier is better than Cancelo. यार बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ फुल बैक्स आपने कंपेयर कर दिए यार। ट्रिपियर डिफेंसिवली सॉलिड है, सेट पीसेस में अच्छा है। कंसेलो भी डिलीवरीज में अच्छा है, ट्रिपियर जैसा है, उसमें तो इक्वल है। डिफेंसिवली आई वुड स्टिल गिव द अपर हैंड टू ट्रिपियर, बट कंसेलो इज यूनिक मैन। कंसेलो कैन प्ले बोथ विंग्स एंड ही कैन प्ले आगे भी। ही कैन स्कोर ऑल्सो मोर कंसिस्टेंटली देन ट्रिपियर। बड़ा मुश्किल कंपैरिजन है। न्यूकासल वाले डिफेंडर ने भी पॉकेट किया था। Again, I think Dan Burn की it was just one of those games. If you look at Dan Burn in the Premier League, he's been running ragged भाई, मतलब काट रहे हैं Dan Burn की। गुड नाइट भाई, गुड नाइट आदित्य पाठक। डेली एली तो अलग ही यार, छोड़ दो उसको। मैंने AWS सुना था, आयरन मैन बिसाका का। अच्छा, आपने Amazon सुन लिया था उसको। भाई गेम इज वेरी डेड गाइस, टू बी ऑनेस्ट। नथिंग स्पेशल इज हैपनिंग। ट्रेसी या इस्माइल भाई अगर आप हो तो कल यार टाइम स्टैम्प्स डाल देना, अगर गोल होते हैं तो भाई।
It looks like Karthik Bhai ki game. Karthik Bhai ki prediction is coming right. Although here comes Sociedad. Kubo again plays through. हमारी ट्रेवर है बट कुछ नहीं हुआ भाई. Botman has fell off so hard. Remember people putting him in Saliba VVD bracket. Yeah, they were saying 30 million. He is a fraction. क्या वही मतलब यही यार था ही यार क्या ही कर सकते हैं उसका. यार ये तो ओवर रेटिंग तो होती है. यार वो तो छोड़ना तुझे याद है यार मतलब लेस्टर had replaced us in the big six and you look at Chelsea now. Chelsea are so much worse than we were ever were. Do you see any team being like Villa has replaced Chelsea in the big six? या फिर अभी कौन है न्यूकासल हैज रिप्लेस्ड फलाना टीम इन द बिग सिक्स ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये बड़ा ना ऐसे ही चलता है पेड्री was circumstantial yes Gavi was no Gavi was purely on merit so was Ajax Moriba Pug and Pjanic अच्छा there was Ajax Moriba Pug and Pjanic and it was simply that he was much better than this lot his intensity is unmatched yeah Gavi is one of my favorite Gavi Balde and Lamine these are my three favorite players in Barcelona right now ठीक है I still think Gavi like Lisandro Martinez has the same issue intensity without care now in sometimes you will like that in your player but भाई जैक विल्शर वाले हालत हो जाते हैं here comes भाई Sociedad they run into a hole again भाई beautiful Sociedad अच्छा खेल रही है let's be honest जूबी से ज्यादा मुझे टाके ने इम्प्रेस किया है इस गेम में बट जूबी ऑल्सो इज कंट्रोलिंग द पेस बट Oh, the shot hits the post. Whoa, Merino था क्या ये? Was that Merino? Miguel Merino, भाई, clean shot, man. Good night, Ishan. Good night. Have a safe travel tomorrow, man. Arslan Man United run the Prem. People would make fun of it, but media's reaction to these two clubs shows how big. Exactly, man. Exactly. 100% correct. Every time something good happens in one of these two clubs, the media loves to lump in. The media loves to lump in. He needs good mentors around him. Yeah. Yeah, man. Today's matches have really fallen off, man. Today's matches are really fallen off. And 81 people were still here, by. You guys are soldiers, dude. You guys are soldiers कि आप लोग अटके हुए हैं इस game पे. Guys, two more likes for 185. Let's hit that 185 and then we'll try to move to 200. Let's get at least 200 likes for this stream, यार. अच्छा लगेगा मुझे भी, अच्छा लगेगा आपको भी. अगर हम फॉटमॉब को चेक करें उनका रेटिंग्स चेक करें इस गेम का अभी तक none of the Sociedad players half time ho gaya hai none of the Sociedad players have performed too well Zubi Mendy with a 6.6 Takefusa Kubo with a 6.3 I'm guessing that's because of the times he lost the ball um कितना है उसका dribbling his accurate crosses are 25 his successful dribbles are 3 on 3 um accurate long balls बढ़िया ही तो है यार फिर क्या है उसका अच्छा duels he's lost a lot 3 out of 6 he can't work here Renesu he can't work here Berenche I think has been the worst player man Baki Zubimendi he's been okay 91% passing accuracy 28 touches 1 accurate long ball 1 tackle 1 50% duels though 3 on 3 aerial duels so Renesu he can work here by our boy is alive Pereira has been absolutely superb in dealing with Andre Silva यार Dembele की dribbling बहुत अच्छी है beautiful dribbles from Dembele but a zero accurate crosses Mbappe has been quiet had a couple of opportunities but went बड़ा selfish so yeah dead game man absolute dead game when I lose a duel I'm upset 13 likes for 200 भाई जल्दी कर दीजिए please I told you Bayern बस ball चलाती है final third Rishi bhai, come on. I mean, yes, I will take your word for it because you faced Bayern Munich. But come on, Rishi bhai, you should have beaten them then. अपनी UCL fantasy team देखो. I don't play UCL fantasy, dude, unfortunately. Bro, PK versus VVD. Before answering, please consider PK opponents and VVD opponents. I think both will tell you both were great defenders in their prime. Yeah, man. I mean, people will say recency bias, but I think VVD जैसा defender किसी ने नहीं देखा है. Like, he's gotten praise from bloody Maldini, man. Maldini has said that VVD is a better defender than me. Maldini said that. Can you imagine Maldini saying that? I can't. But yeah. Dembele's dribbling is best in the world, whereas decision making is Sunday league level. Bhai, welcome. Bhai.
हाफ टाइम भी हो कब हो गया लमा पता भी नहीं चला. गुड नाइट भाई, कल कॉलेज है. एंजॉय मैन, एंजॉय. हैव अ गुड डे टुमारो प्रथम. कल मेरा डे ऑफ है, सो आई एम गोइंग टू watch this game and then chill and listen, man. This is content creation. Man. If you win a match 6-0, media will say the opposition played bad, but if Man City play wise, bhai, I am so. बताओ क्या है? Paul Merson was absolutely correct. When we beat West Ham 6-0, na, if Man City had beaten West Ham 6-0, na, media would be like, this is Man City. They are super ruthless. They are like this. They are like that. बट यू नो व्हाट इस्माइल भाई, मैं एक बात बताऊं. वी शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट द ब्लडी मीडिया. जैसे रेनेसो ने कहा है ना, आर्सेनल एंड यूनाइटेड, दीज आर टू टीम्स विल नेवर गेट कंप्लीट प्लॉडेट्स विद द मीडिया. दे विल जस्ट बी यूज्ड फॉर क्लिक्स. वी आर अ वेरी टची फैन बेस ऑनलाइन, ठीक है, हम बड़ा टची फैन बेस है. एंड ये हमारे अगेंस्ट हमेशा होता रहेगा. एंड कोई बात नहीं, भाड़ में जाए. PK's ball playing was elite. Agreed. But man, I think Van Dyke. Okay, I'll say this. In terms of both PK and VVD, आई थिंक अगर दोनों दोनों प्लेयर्स उन टीम्स में नहीं होते, दोनों टीम सफर करती. बट वीवीडी मेरे हिसाब से इन दैट लिवरपूल टीम वुड बी अ बिगर मिस. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर आप कह रहे हो कि हु इज बिन अ बेटर, हु हैज हैड अ बेटर करियर, इट इज ऑब्वियसली जेरार्ड पीके. Gerard Piqué has won multiple Champions League. Gerard Piqué has won the World Cup, the Euros, the La Liga, मतलब La Liga, ठीक है. बट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट आई विल से दैट वीवीडी जैसा डिफेंडर यार कभी नहीं देखा हमने, बहुत कम देखे हैं. Mbappe is wasting himself at PSG. भाई it is what it is. Sané is dreadful. भाई टैलेंट कैसा चल रहा है गेम, आप हमें एक लोडाउन बताइए क्योंकि हम तो नहीं देख रहे. Tell me what has been going wrong for Bayern Munich in this game. What has been going right? How has Kane played? How has Kimmich played? How has Muller played? How are Lazio playing? आपको Lazio में ऐसा कौन सा डेंजर दिख रहा है? IMO PK is better. That's fair, man. IMO, it's all opinion, man. The opponents he faced in his prime. Quantum fighter, बिल्कुल सही points है यार. He faced Ronaldo, Di Maria, Ozil. He played prime Real Madrid and he kept them silent, man. कोई और डिफेंडर ऐसे कंसिस्टेंटली उनको साइलेंट रखता तो हम भी उसको बहुत ज्यादा रेट करते. अगेन फॉर मी इट्स वीवीडी, मे बी इट्स प्रेम बायस, कॉल इट व्हाटएवर, मैन. Mbappe needs to buy content, start his own PSG. Thoughts if MUFC ended up appointing Dan Ashworth? Yeah, on paper, it's a good move, man. It's also about the fact how much Glazers आपको पैसे देंगे, how much Barada and Dan Ashworth work together. Sometimes things look really good on paper. Like जब Sven Mislintat and Raul ये सब आए थे आर्सेनल में, एडू, राउल एंड स्वेन, तब हमें भी लगा था कि यार बहुत बढ़िया टीम है बिकॉज राहुल वर्कड एट बारसा, ठीक है. स्वेन मिस्लिन टैट वर्कड एट डॉर्टमंड एंड एडू इनविंसिबल है, तो हमें लगा तीन बढ़िया फुटबॉलिंग ब्रेन्स को आपने आर्सेनल में रख दिया है. एंड लुक, राहुल टर्न्ड आउट टू बी करप्ट, Sven turned out to be power hungry and he's been fired from his, or he's left his last two jobs. Even at Ajax also I think he's under pressure right now, ठीक है. And so on paper things can look really good. So on paper that is a good important thing that you've figured one thing out. On paper it should work. Now whether it works in real life, क्या ही पता यार, क्या ही पता. uh, his 2019 season was the best. Yeah, I think Van Dijk in 2019 was crazy, man. Can we call Kamavinga as an elite talent? Good question यार. Versatile है, young है, dominate करता है अपनी space को, जीता भी हुआ है. Yeah man, 100%. Maldini, Ramos, VVD, Puyol, PK, man. भाई माउंट रशमोर ऑफ डिफेंडर्स. विंडूजी स्टार्टिंग, हाँ भाई, ही इज प्लेइंग एट लाजियो भाई. तेरा फेवरेट प्लेयर खेल रहा है. PK was so good, Ramos had to play RB in Spain. In the beginning, Ramos was an RB. वो तो इवेंचुअली फिर हो गया. PK पुयोल की पार्टनरशिप तो अलग ही थी. Ramos खेला हुआ है. How do you think of PSG after halftime? Not to sound cocky or anything, if we had faced both of these teams in this leg, I think we would be winning this game. If Arsenal were playing either Sociedad or PSG, I think we would be winning this game. Both teams have zero control right now, मेरे हिसाब से. पर्पल हेयर किसी के नहीं है, सैड. हेलो दक्ष भाई, क्या हाल है? बिल्कुल हाँ यार, बोरिंग मैच चल रहा है. राजल भाई, आप कैसे? हाउ इज योर नाइट गोइंग? हाउ वाज योर वैलेंटाइंस डे? भाई रियल मैड्रिड इस साल क्या आउट ऑफ चैंपियंस लीग जा सकती है? योर ओपिनियन प्लीज. या आई थिंक there is Man City that can knock them out for sure. I think the only team that is in danger of knocking them out for sure is Man City.
बाकी सब इन अ वन ऑफ गेम यार कुछ भी हो सकता है, राइट? कल आपने लाइप्सिक वाला गोल देखा, जो मेरे हिसाब से, आई स्टिल मेंटेन द फैक्ट इट वाज रॉन्गली डिसअलाउड। आई थिंक इट शुड हैव स्टूड। द फैक्ट दैट टोनी क्रूज हैज कम आउट आफ्टर दैट एंड सेड कि भाई हो रहा है क्या? बाबा के स्ट्रीम पे क्या हुआ है? मैं एक बार साइड पे लगा के देखूं क्या हुआ है बाबा की स्ट्रीम पे। ये तो मानस और निधि देख रहे हैं। बाबा कर भी रहे हैं स्ट्रीम? कर तो रहे होंगे। अ, बाबा बाबा ने क्लोन बाबा, क्लोन बाबा। नेक्स्ट बारसा माय ओपिनियन, नेक्स्ट बारसा। Oh, you mean coach? I think you mean coach. Yeah, I think it should be Deserby. It should be Deserby, man. उसके अलावा I don't think anyone works out. हाँ, कोपनहेगन 3-1 हार गई कल, वही देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम सिंग दक्ष भाई कॉन्फिडेंट अबाउट आर्सेनल। यार है दम हम में यार, ऐसी बात नहीं है। I am just realistic. I don't go too overboard and I don't go too pessimistic also. I know for a fact that Porto game will be very difficult. I also know for a fact in the next 5 Premier League games we can win all 5 until we face Man City. That Liverpool game has given me so much confidence, आप लोग जानते भी नहीं। वो लिवरपूल वाले गेम ने बहुत कर दिया। होल मिलान बैकलाइन, बैक इन द डे, मल्डीनी, नेस्टा, बरेसी, कोस्टा कुर्ता मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट कोस्टा कुर्ता, सो आई कांट स्पीक अबाउट हिम, बट यस द अदर थ्री फैंटास्टिक मैन। काफू खेलता था भाई मिलान में, काफू। आई एम फाइन ब्रो, कोई वैलेंटाइन नहीं है भाई। वैलेंटाइन डे नींद में चला गया भाई। कंग्रेचुलेशंस मैन, बहुत पीसफुल वैलेंटाइंस डे रहा आपका, इनक्रेडिबल। um yeah, so that is the comment still now यार। बायन बायन का क्या टैलेंट भाई ने कुछ बताया? समझ ही नहीं आ रहा यार, यूरोपा लीग है कि चैंपियंस लीग है? टैलेंट भाई कह रहे हैं, अरे बाप रे। और टैलेंट भाई ने दी एवरीथिंग इज गुड एक्सेप्ट फॉर फिनिशिंग एंड लाजियो इज ड्रेडफुल। हराम बॉल खेल रहे हैं। अच्छा ये सीन है क्या? RM वर्सेस आर्सेनल मैन, again over two legs I will give the edge to Real Madrid. Over one leg anything can happen. If Arsenal play Real Madrid in the final, let's say somehow that happens, I think it'll be a coin toss man. Of course Real Madrid के पास अलग मोटिवेशन होगी वो 15th चैंपियंस लीग जीतने की, बट आर्सेनल इन अ वन ऑफ गेम भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। बट या फुली फिट रियल मैड्रिड, जिसमें रूडिगर, मिलिटाओ, तीबो, कामाविंगा, चुआमेनी, जूड, विनीशियस, रोड्रिगो, सब खेल रहे होंगे। Formidable team, man. I will still give the edge to Real. They'll always, if Arsenal face Real Madrid will be favorites. That's it. Nearly recreating that Henry goal, bhai. You know what? Real Madrid have never beaten Arsenal in the Champions League. That's a true stat. That's a true stat. Real Madrid have never beaten Arsenal in the Champions League. So if we can continue that tradition, that'll be fantastic, man. If Bayern and Madrid, one of them got deleted from football, which the going away of which team you think will affect football the most? You're right, it is a random question. If one of them got deleted, definitely Real Madrid, man. I think it's easier to delete Bayern Munich because you can say उनके जो पुराने 1945 वाले टेंडेंसीज थे वापस आ गए थे। I'm kidding. नहीं यार, रियल मैड्रिड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है फुटबॉल पे यार, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उनका। रियल मैड्रिड एंड यूसीएल आर ऑलवेज वन ऑफ द, हाँ हाँ 100%। घूम फिर के रियल मैड्रिड फेवरेट आ जाती है, ऑल्सो मैन सिटी। वही है यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वार्टर फाइनल में ना रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी करा दो। भाड़ में एक निकाल भी दो भाई, एक निकाल ही दो उनको। ठीक है ना, क्या करोगे? ठीक है, दोनों को लीग जीतनी है, अपनी लीग जीत के खुश हो जाओ ना, क्या करना है? Yeah, Real Madrid versus City should be quarterfinals, man. Start a petition for this. Start a petition. Daksh bhai, check your Twitter, tagged you something that'll crack you up. All right, Parampreet. It better crack me up, Parampreet. Yeah, I miss playing Tekken, man. Okay. Oh, ये तो सिड का है यार। तूने किस पे टैग किया है मुझे? परमप्रीत, व्हाट डिड यू टैग मी इन? सिड का तो मैं चेक कर लूंगा अपने आप। भाई दैट शॉन डी एलओएफसी वाला बंदा ना इज पिस्ड मी ऑफ मैन। ही विश्ड इंजरी ऑन साका ऑफ ऑल प्लेयर्स डूड। ऑन साका, वियर्डोस डूड। लेट मी रिफ्रेश। नहीं यार, तेरा तो आया नहीं है परमप्रीत। व्हाट हैव यू टैग्ड मी इन? आपने सही जगह टैग किया भी है। दिस इज माय ट्विटर मैन।
If you haven't followed me there, you can follow me there. अगर नहीं किया है आपने तो. um, कैसे हो अशमल भाई? नाइस टू सी यू भाई. फाइनली यू बैक अगेन. नाइस टू सी यू. नाइस टू सी यू. मिस्ड यू. um, बेस्ट मिडफील्ड एवर. जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स और मॉड्रिच, क्रूज, कासे और काका, पिर्लो, गटूसो, सीडोर्फ. इट्स अ गुड क्वेश्चन. Yeah, I think Javi, Busquets, and Iniesta, man. I would pick that midfield to do anything in the world. Put any bet in the world, and if that midfield has to come out on top, it'll be those three. Um, okay, I have an interesting question for you. If especially if you watch Arsenal, and if you're an Arsenal fan, I'm very interested in your opinion. चाहे रेनिसो हो, चाहे इस्माइल भाई हो, चाहे राघव हो, चाहे कोई भी हो. Do you think this season's Arsenal can beat last season's Arsenal? Do you think 23-24 Arsenal can beat 22-23 Arsenal? 22-23 Arsenal, which was league leaders for 248 days, played beautiful football, had Granit Xhaka, Thomas Partey, pre-injury Jesus, pre-injury Zinchenko, a running, gunning Bukayo Saka. Can this season's Arsenal beat last season's Arsenal? Arey, kaise ho Aryan? Welcome to the channel, man. We are so happy to have you. So happy to have you join us. यहाँ पे we talk about Arsenal, we talk about football in general. But yeah, Arush says yes. Devesh says no way. Sociedad game is fun. Kubo is, I don't think it's funny apart. But yeah, Kubo yeah is making it interesting. I think both teams are playing ping pong. Errol says no. Ismail by Arsenal fan कहते हैं definitely. Um, PSG fan and Mbappe fan यार सब PSG से सब इतना जलते क्यों हैं? Yeah, everyone thinks it's a soulless club, it's money hungry, they buy their way to success, which they do to an extent, which is why they get a lot of hate, you know. But listen, man, I don't care. I think if you love PSG, keep loving PSG. With Timber SLB, यार एक बात बताओ प्रथमेश, हमने टिम्बर को देखा ही कितना है यार? हमने तो उसको लिटरली थोड़ा सा प्री सीजन देखा था, एंड हमने थोड़ा सा ही उसको फर्स्ट गेम में एक हाफ देखा था. No, 2022-23 was one of the greatest European teams of the past decade, says Karthik. Okay. Maybe. Yes, because of Havertz, says Sudhesh bhai. आशिकी पे कुछ कहो गुरु, कोई आशिकी पे कुछ नहीं कहेंगे भाई. आपको अगर कोई मिल जाता है अपने लिए तो अच्छी बात है. उनको प्रोटेक्ट करिए, उनको खुश रखिए, यही आशिकी है. No, says Purple Patch. Yep, tagged you in Dr. Yash Jeff. The way Mbappe checks the brochure. Oh, okay. मैं check करता हूँ उसको. PSG fan हो गया. This season Arsenal is better than last 5 years. Arsenal is my opinion by says Abdullah. I agree with you and Dr. Ismail. Last year Arsenal better says Parth. Is UCL 2 मैच से आका मेरा बहुत अच्छा आका था क्या? इस UCL 2 मैच से मेरा गॉम पता नहीं यार. Fully fit lineups. Last season, fit lineup was unbeaten. Plus, the way last season Arsenal started games would blitz this Arsenal season and then control the game. Or, Renesu, counterpoint. Do you think last season Arsenal would score first, twice, bottle the lead, and this season's Arsenal will come back? PSG से जलते नहीं चिढ़ते. Until they bottled, they were looking very good, better than this season. Bro, A for Arsenal नहीं है, A for Apple होता है. Lol. Plus, we've never seen a fully fit lineup this season. That's true, actually. टैग डे हो गया, देख लेंगे. लिया का पोस्टर, हाँ, लिया विलियमसन. दैट्स ट्रू मैन, आई लव लिया विलियमसन. एनीवेज, गेम हैज रीस्टार्टेड गाइस, पता भी नहीं चला मुझे. लास्ट ईयर आई वाज मोर स्कैर्ड ऑफ फेसिंग आर्सेनल एंड पीएल देन दिस ईयर, लेकिन इस बार हार गए, सेज पार्थ. फेयर इनफ मैन. आई हैव अ फीलिंग दिस ईयर वी आर a lot more surgical. We're not dhoom dhadaka rock and roll football. I think this season we are a lot more controlled. Thing is, I have my reservations about Zinchenko. Happy Valentine's Day, Errol. Happy Valentine's Day to you. My crush got a GF, man. Congratulations to her and commiserations to you, bhai. Thankfully, बहुत बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया में. Happy Valentine's Day to my Valentine's पक्ष भाई. Happy Valentine's Day to you as well, Krish भाई. But I have more confidence with this Arsenal in big matches. You know what? Me too, man. Me too.
My hair is too boring. Oh, buddy, come on. Um, मेरे गली में टूर्नामेंट मैच बहुत अच्छा था, ये दो यूसीएल मैच। अच्छा, ओ या last season Arsenal fully fit never bottled leads. In fact, he rarely conceded goals. Remember, our defense conceded like 7-8 goals before the World Cup. Huh, but our numbers now are matching last season's numbers. I think last season was, especially pre World Cup, na, that form was the best form we've ever had in the history of Arsenal. It's better than the Invincibles form. So, एक sort of, I completely understand people's feelings, but I feel this season's team beats it. Maybe it's recency bias. Maybe. I don't know. आर्सेनल के समर ट्रांसफर प्लान्स यार, एक स्ट्राइकर चाहिए, एक मिडफील्डर चाहिए, एटलीस्ट एक विंगर चाहिए, दैट्स ऑल आई वांट। एटलीस्ट ये तीन चीज़ें तो चाहिए। ये हैप्पी वैलेंटाइंस डे क्या चल रहा है, वो तो कल था ना भाई। एवरी डे इज अ वैलेंटाइंस डे इफ यू वांट इट। मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम कब? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कल की चिल स्ट्रीम पे आधा घंटा विल मेक इट मेंबर्स ओनली, ओके? बिकॉज फ्राइडे को आई एम फ्लाइंग टू लंडन, एंड या फ्राइडे को आई एम फ्लाइंग टू लंडन बॉयज। सो मैं आऊँगा ट्यूसडे को। दिस आर्सेनल इज वे मोर मैच्योर, दिल काम। मेरी स्ट्रीम रुक गई, मुझे पता भी नहीं चला, ये गेम इतना बोरिंग है। They'll be calm if they go down. Good start. Okay, good shot. I'll make a short on this. I'll make a short on this on why I feel last season Arsenal would lose against this season's Arsenal. But it's a good question, man. It's a good question on all clubs. Will your team last season beat your team this season with a fully fit squad? If Arsenal win a treble, you will dye your hair red and gold. Yeah, I will go bald, but because Arsenal cannot win the treble. Sociedad, Andre Silva, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, फिर से ऑफ साइड, ऑफ साइड। Also depends on which Arsenal are playing. If 2023 before World Cup, 23 after, 24 after Dubai. Yeah, that's true. Some way or the other. Ask Chelsea. Guys, will Chelsea of last season beat Chelsea of this season? Oh God, भाई। ओह, अम्बापे। अरे मिस कंट्रोल हो गया अम्बापे का यार। हकीमी हैज द बॉल। मुझे लगता है हकीमी, अम्बापे और डेम्बेले अपने में ही खेलते रहते हैं। Last season City or this season? Bhai, last season City was insane. It'll be insane. इस पे एक अच्छी सी शॉट बन सकती है। मैंने दो शॉट्स के आइडियाज तो तैयार कर लिए। हकीमी कम्स इन, shoots, अरे straight to the keeper. This season Liverpool will beat last season Liverpool 5-0 easily. I agree. I agree. It'll be 0-0 draw for Chelsea. This season Real Madrid beats last season Real Madrid black and blue any month Monday through Friday. अच्छा। Hey, last season Benz था यार तुम लोगों के पास. So you're telling me last season's Real Madrid with Benz, Vinny, Rodrigo, Cruz, Modric, Kama, Chouameni, Militao, Thibaut. मतलब इस सीजन तो आप लोगों ने एसेंशियली झूठ को ही करा है, राइट? बट लास्ट सीजन का फुली फिट स्क्वाड इस सीजन के प्रेजेंट स्क्वाड को बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? दैट्स अ क्वेश्चन. बेलिंगम नहीं था, बट यार बेंस था यार आपके पास. This season Barca gets hammered by last season Barca while they keep a clean sheet. That's true, man. That's true. A good shout. Good shout. I think Arsenal case is the most interesting though. Think Real Madrid ने सिर्फ essentially झूठ को ही ऐड किया है. But I don't know, man. I would say last season's Real Madrid would have a very good chance against this season's Real Madrid, man. With Thibaut in goal, अभी लूनिन है आप लोगों के पास. कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना. इस पे मैं 2-3 शॉट्स बना सकता हूँ यार. क्वेश्चंस डाल के बहुत बढ़िया बनेंगे इस पे तो. एक-एक टीम का एक-एक शॉट बना दूंगा. कैन दिस सीजन्स रियल मैड्रिड जो लास्ट गेम खेली है play this team? At this point, last season would do better. Says Arush. Yeah, fair enough. Bhai. Combine the last year's team and this year's team, Madrid fan.
बेंजेमा विद जूट, हाँ तो वही है ना। ओह अच्छा, आप कह रहे हो होसलू की जगह आपके पास बेंजेमा होता, या फेयर इनफ। वाई स्केपर ड्रॉप्ड? यार लूनन बड़ा अच्छा कर रहा है यार, इस्माइल भाई कल ना ही मेड इनक्रेडिबल नंबर ऑफ सेव्स, उसने स्वीपिंग भी बहुत अच्छी करी, उसने सेव्स भी बहुत अच्छे करे भाई। क्या ही चल रहा है इस गेम पे, आई एम सो डिसोरिएंटेड। दक्ष ब्रो, व्हाट अबाउट इंटर लास्ट सीजन सेमीज बट दिस सीजन लीडिंग फॉर स्कडेटो? गुड क्वेश्चन मैन। इस सीजन उन्होंने मार्कस थूराम ऐड किया हुआ है, और किस किस को ऐड किया? सैंचेज इज बैक। चला हांगलू, चला हांगलू इस सीजन है ना? हकान, हकान इज कमिंग दिस सीजन, वाज ही लास्ट सीजन आल्सो? फाउल है ये तो, फाउल, फाउल नहीं है, अरे बाप रे। गाइस ट्रेसी जैसे ने अच्छे से याद दिलाया यार, स्ट्रीम लाइक कर दो अगर नहीं किया है, एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। वी आर एट 204 लाइक्स, एब्सोल्युटली इनसेन यार। नाउ एवरी अदर लाइक इज अ बोनस, सो आई अप्रिशिएट इट मैन। भाई स्ट्रीम के बाद कहाँ छुपोगे? दीदी तो नाराज हो गई। कुछ नहीं होगा भाई, दीदी इज एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। Why is Kepa dropped? Like asking why isn't Lewandowski not dropped? Although last season Arsenal played beautiful football, it was vulnerable against counters. While this season Saliba playing amazing. Why have Rice could win against the counter? Let's see, man. Let's see. This Inter is unstoppable. Okay. Inter Milan also sent Pavard. Hakan is there. Yeah, you're right. Hakan is there for 2 seasons. हाँ, हकन और मिकिटारियन ही तो चला रहे थे। मार्कस थूराम आया है, लोटारो इज प्लेइंग एट अनदर लेवल, लुकाकू चला गया है इस सीजन। पीएसजी के बाद सबसे ज्यादा आर्सेनल ही पसंद है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ बुकायो साका। बुरहान भाई, यू आर एन एब्सोल्यूट लेजेंड भाई, दिस इज वाई डोंट लिसन टू द हेटर्स भाई। Thinking of buying another Arsenal jersey, you suggest waiting till the end of the season, and if you win something, get a jersey with that last goal scorer name on it. Would be funny if it's an opposition one. Lol. देख ले यार, ले ले, इट विल हेल्प विद दैट जुबी मेंडी ट्रांसफर। जुबी मेंडी ट्रांसफर में मजे आएंगे। ओह कुबो, कुबो, oh भाई कुबो is so good dude, कुबो is so fucking good, कुबो is so good, bloody hell, he's way too good man। लेकिन लास्ट ईयर इंटर हैड ब्रोजोविच, ओनाना एंड ज़ेको, गुड स्टफ, दैट्स अ गुड शाउट। अभी कौन है कीपर उनका? सोमर है ना? सोमर, सोमर कैसा खेल रहा है? सोमर भी अच्छा है। 53 55 53 56 53 57 53 58, that is my timestamp। Zubi Mendy with the ball, he's secure on possession man, he's a conductor man। कुबो इज लमासिया डेवलप्ड, लमासिया डेवलप्ड, लमासिया है या फिर रियल मैड्रिड का है? आई थिंक ही वाज लमासिया, उसके बाद वो मयोरका गया था शायद से, एंड देन ही वाज एट रियल मैड्रिड, एंड देन उसके बाद सोसिएडाड पहुंच गया। आई थिंक ऐसे कुछ सीन था। जावी सिमंस कुबो, हाँ जावी सिमंस, इट इंटर आर एडिंग टारेमी एज वेल, हाँ ये सुना है। अंबापे, ओ नहीं अंबापे नहीं था, ये तो लग रहा था, ये तो ब्रैडली बारकोला था। एंड कॉर्नर फॉर पीएसजी, भाई ब्रैडली बारकोला ने भी अच्छे से निकाल ली बॉल। बारकोला भी बहुत बढ़िया कर रहा है। बारको आई थिंक वाज बारकोला लिंक्ड विद चेल्सी आल्सो, नो? भाई चेल्सी में सोच अगर बारकोला होता तो क्या होता। हाउ टू फिक्स चैट स्टॉपिंग फ्रीक्वेंटली? आई डोंट नो इस्माइल भाई, रिफ्रेश ही करते रहो, आई गेस दैट्स द ओनली थिंग। गाइस द गेम्स आर डेड मैन। इंटर आर ट्राइंग फॉर जिलिंस्की एज वेल, पियोटर जिलिंस्की, ओह इंटरेस्टिंग। ओनाना एंड कुबो बोथ आर ला मासिया प्रोडक्ट्स, लेकिन दे वर बैंड आई गेस बिकॉज ऑफ सम स्कैम बाय बारसा। ओह ओके, आई डिडंट नो अबाउट दैट। यार मुझे पीएचजी के बाद, हाँ ये तो पढ़ लिया भाई, इट इज़ अ बोरिंग मैच डे मैन, कुछ भी नहीं चल रहा है। ये मैच जैसे ही खत्म होगा मैं तो चले जाऊंगा चिल करने। भाई हमारे ट्योरे को बहुत बड़ी इंजरी होगी लगता है। आयरिश एक्सेंट में कुछ बोल यार, माय आयरिश एक्सेंट इज एब्सोल्युटली क्रैप, लाइक आई कांट bring it up on the spot, but if there's an Irish person talking to me then maybe I can। out of context Irish accent sounds really weird and funny। कुबो एंड फाटिक का एक फेमस पिक्चर है चाइल्डहुड में लमासिया की, ओह दैट्स व्हाई। ओ नी पकड़ ली भाई हमारी ने। क्या करोगे स्ट्रीम के बाद? आई जस्ट चिल मैन, आई प्रॉब्ली प्ले टेकन, एंड आई प्रॉब्ली वॉच सम डीमन स्लेयर ऑन द साइड।
ऑल्दो डीमन स्लेयर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. सब सुन रहा हूँ मैं, डब भी नहीं है. विच इज द बेस्ट आयरिश विस्की? रेड ब्रेस्ट. अमेजिंग आयरिश विस्की. um Jameson's also really nice, but Redbreast is insane. Jameson की है, but Redbreast is crazy. Played initially in Barca but developed in Real Madrid. All right, Senators Hub. Thank you so much. भाई, it lived up to its hype भाई. Total Nazi football भाई. बिल्कुल नाजी फुटबॉल चल रहा है. ब्रो मुझे नहीं लगता कि अभी साका से बड़ा कोई भी राइट विंग है. आप क्या कहते हैं यार? है यार, है. There's this player called Mo Salah, who I think is a better right winger than Bukayo Saka. उसके अलावा, okay, name me right wingers who are better than Saka. Oh, goal by Mbappe! Mbappe has scored out of nothing भाई. PSG ने गोल मार दिया. किलियन अम्बापे. किसी ने कहा था क्या अम्बापे 57th मिनट 58th मिनट पे मारेगा गोल भाई? किलियन मैन, गेट हिम टू आर्सेनल, गेट हिम टू आर्सेनल भाई. दिस गाय इज इनसेन. आयरिश दारू पीते हो लेकिन एक्सेंट नहीं आता. नहीं आता भाई एक्सेंट. एक्सेंट्स नहीं. माय एक्सेंट अमेरिकन वन इज स्टिल ओके, बट आयरिश वन नो. किलियन अम्बापे मैन. ये फ्री किक थी डेम्बेले की, हेडेड ऑन बाय मार्किनियोस, एंड भाई अम्बापे को कुबो ने नहीं पकड़ा भाई. पीएसजी, दे आर इन. स्कोर भी चेंज कर देते हैं. स्कोर भी चेंज कर दे. 57th मिनट पे PSG have scored and Mbappe is the one who is the goal scorer. तो अगर किसी ने प्रिडिक्शन करी थी PSG to score first and Mbappe to score in the 57th minute, man, tag me in Twitter with that screenshot and the time and let me know. You will be gifted a membership on this channel भाई. Commentate in American accent once. कर देंगे भाई, कर देंगे. बहुत लेट मारा है. कहाँ मारे? 58 मिनट्स हुए. अभी भी सोसिएडाड कुछ कर सकती है. मैंने बोला था. अच्छा चलो स्क्रीनशॉट कर दो. स्क्रीनशॉट करके टैग कर दो मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं चेक कर लूंगा. साला, डेम्बूस, फोर्डन, रोड्रिगो. साला, आई अग्री. इज डेम्बेले बेटर देन साका? लेट्स डू दिस. इज डेम्बेले बेटर देन साका? यस और नो? सिंपल सी बात है. मैंने की थी 2 मेंबरशिप्स एज देवेश. ना 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 ना. आई डोंट थिंक डेम्बेले इज बेटर देन साका. ओ अच्छा, प्रेडिक्शन के हिसाब से लेट मारे. लॉल. नो वे. आई एग्री. ऑलराइट. Is Chatterjee, Rodrigo better than Saka? This is this can be a little tight because Madrid fans, of course, will think Rodrigo is better. I completely understand. Is Rodrigo better than Saka? Dembele again. बोलती बंद करने. Oh, Hakimi almost. Is Rodrigo better than Saka? No, maybe, says Ismail bhai. No way, says Burhan bhai. बुरहान भाई आर्सेनल फैन है. आरुष भाई बारसा फैन है. प्रिया मुझे नहीं पता, या प्रिय है आपका नाम. They are almost on the same level, but I think Saka has better stats. Dembele can never reach his potential due to lack of hard work. Fair enough. Yeah, I can understand the shouts for Rodrigo, man. Rodrigo is really, really good. But is he better than Saka? Is a tough shout, man. Saka as an individual, Rodrigo as a team player. All right. Is Foden better than Saka? Listen, man. I will stop this channel, but I will never, ever agree that Foden is better than Saka. Foden is not better than Saka. I think Foden plays in a better team than Saka. I think that elevates Foden's game much better than that. But I don't think Foden the player is better than Saka the player. I think वो आपको दिख जाता है इंग्लैंड में साका गोस थ्रू मेरे हिसाब से. इंग्लैंड में ही देख लो यार. फोर्डन कहाँ इतना इंग्लैंड में करता जितना साका कर लेता है. नो वे. साका इज बेटर देन फोर्डन भाई. नो वे फोर्डन इज बेटर. नो वे. अम्बापे प्लेस डेम्बेले भाई. नो वे फोर्डन इज बेटर. नो वे. I will never admit it. I will never agree to it. Dembele cross and cleared out again. Arush says yes.
Parth says yes. Devesh says Delulu. Parampreet is on my team, bhai. Parampreet is on my team, bhai. No way is Foden better, bhai. No way is Foden better. Hakimi. 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 पीछे Dembele. Crossed part. Rafinha clear. Saka clear of Foden. Let's go, bhai. Foden is versatile. Yeah, yeah. Oh, come on, man. Saka also started as a left back, and I think Foden is not versatile by choice. He's versatile by circumstances because Pep keeps moving him. I think Foden's a great player. Don't get me wrong, man. But I think he's not better than Saka. I think he just plays in a much, much, much better team than Saka. Anthony is clear. Bus. यही चाहिए. Daksh bhai, we can't compare England or club level को. Southgate doesn't have a clue how to play Foden. Yeah, but then how does he have a clue how to play Saka? ये तो बताओ ना मुझे. I understand he might not have a clue how to play Foden, but how does he know how to play Saka? And why is Saka so good for England? I think to some extent it is also due to favoritism by Southgate. Yeah, but we don't care. Hi Ryan, how are you? Nice to see you here, man. It is a joke, man. It was a joke. Both are different players, though. It's like comparing Rice and Jude. Yeah, don't compare Rice and Jude. Rice is better. Rodrigo is probably not better, but has performed in the biggest matches. But Saka is more talented, coming from a Real fan, says Pulsar. Thank you so much for your opinion, man. देखो मैन, आपको कोई भी पसंद हो, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता. आई विल ऑलवेज लव साका. Mbappe takes a shot. भाई Mbappe, he's a beast. भाई look at that shot. Have you seen that shot Mbappe का? Corner, Dembele gets tackled, foul on Dembele भाई. इसलिए बंदे की टांगे कट जाती हैं. Anthony is the best RW. Is Anthony a better attacker than Saka? I think yes, says Parth. All right. I do feel Foden is better. It's fine, Utsav. It's fine. आप सबके opinions होंगे यार. मैं तो opinion ही तो पूछा है ना. We have a better Foden in a Sky Havertz. Raj knows the truth, man. Raj knows the truth. Saka is a pure LW where Foden is versatile. तो समझ नहीं आता कहाँ से देख लिया. देखना. Saka played left back, left wing, right wing. He's played on all four positions. He started as a left back. Then he moved to left wing जब पेपे राइट विंग पे खेलता था. एंड नाउ ही इज मूव टू राइट विंग. एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड में ही विल मूव टू राइट अटैकिंग मिड, जो राइट हाफ स्पेस होते हैं. ही विल इवन स्टॉप बीइंग अ विंगर आल्सो. फोर्डन की तरह ही he'll start moving to the right. Foden has 1.5x pep multi. Exactly, man. Saka is OF. What? This is why we want him at Real, lol. Exactly. दक्ष भाई रोस्ट करने के मूड में. नहीं भाई, राइस इज बेटर देन जूड. भाई राइस इज बेटर देन जूड. All Real Madrid typing a paragraph to explain why Jude is better than mixture of abuses for Daksh. Yeah. भाई मुझे आज इतने ट्वीट्स मिले. दक्ष भाई, तू रियल मैड्रिड फैन नहीं है ना दक्ष भाई, इसलिए तुझे नहीं पता है. विदाउट नोइंग कि लाइक I have such a soft spot for Real Madrid. I was so happy they won yesterday. Just all agree that Rocky sucks. Rocky? Southgate is too dumb to understand Klopp and Pep players. अच्छा. भाई कौन आया है? Who has come on again? Arsene Zakarian. अरे ये नाम सुना कहाँ है? Arsene Zakarian. ये चेल्सी से लिंक नहीं था? Arsene Zakarian. Is he Russian? Arsene Zakarian. 20-year-old. He is Russian. He was linked with Chelsea. He was linked with Chelsea. Don't forget, Saka is better than Foden. साला की एज हो गई है और मार्केट वैल्यू भी साका से काफी कम है. साला है साला भाई. साला is साला. The day Salah goes to any team, that teams become automatic contenders, man. ज्यादा ग्लेयर किसके पास है according to you? Glare? Foden better player, Saka better winger. If I want a pure out and out winger, I'm going for Saka.
I want to build a game plan style. I think Foden is my guy. Fair enough, bhai. Fair enough. I think even as a playmaker, Saka is better. Saka to Real Madrid. Who says no? I mean, I'm up for a trade between Saka and Rodrigo. I am not. I am not. Upamecano red card. Oi, Upamaguire memes. We are alive, bhai. Jude and Basmati comparison is hilarious. I know, man. At this moment, I think Yamal is better than Saka. Okay, fair, fair, fair. भाई अभी सोसिएडाड आगे थी भाई जेन्युइनली गेम के तो बारे में कुछ बात करने को है ही नहीं अच्छा अदर क्वेश्चन डू यू थिंक साका इज जनरेशनल इन द सेम कैटेगरी एज जूड एंड पेड्री जूड नो पेड्री मे बी साउथगेट शुड मैनेज चैंपियनशिप क्लब Lamine Yamal, he's single-handedly carrying Barca. Bhai. Yeah, shout out to him, man. Shout out to him. It's why I love Lamine Yamal because he reminds me of Saka. Saka single-handedly carried us in our worst period. Oba ke saath. It was Oba and Saka. Literally, these two carried us for so long. यार बुरहान भाई इसका तो हम मतलब इसी स्ट्रीम पे 2 बार किसी ने पूछ लिया है मैं बार बार स्टोरी बोलते बोलते थक गया हूँ कोई मॉड बता देगा आपको लाजियो लीड लेट्स गो नो वे लेट्स गो भाई ये गोल तो देखना बनता है यार नो वे डोंट गेट मी रॉन्ग आई थिंक साका इज वर्ल्ड क्लास आई बिलीव साका वुड बैटल विनी फॉर द बेस्ट विंगर इन द फ्यूचर भाई विनी इज अ डिफरेंट क्लास मैन विनी इज अ डिफरेंट क्लास okay let's see if there's a goal man where is this Lazio goal was it a pen Immobile ने मारा है my brother भाई Immobile Mbappe यार Mbappe man he's too good dude red card plus penalty to Lazio against Dayo Upamecano penalty थी तो penalty यार लगता था I want Saka to run more in the PL he can't unfortunately he gets triple teamed and then he gets fouled mad sentence but yes yeah oh do you think Arteta would want to manage Barca in the future? हाँ हाँ 100% भाई what a pen what a nice calm pen yeah I think he will be but अभी नहीं Arteta needs everything else in place अभी Barca is at a different financial situation Saka has played all league games of the year for the last 2 seasons that's something that's true he has been remarkably not all he didn't play the City game so he's been injured recently but yeah Upamecano is an overrated bozo. Bhai, I remember at a time Upamecano was the highest sought defender from Leipzig. हाँ मैथ वॉइस से कुछ नहीं होता वॉइस से कुछ नहीं होता इट्स फाइन ब्रो इस बार का पीएल कौन जीतेगा क्या लगता है यार बुरहान भाई इट विल बी सिटी ओनली अनफॉर्चुनेटली इट विल बी सिटी बट लिवरपूल आर माय फेवरेट्स टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई फील दैट यूरोपा लीग ना कहीं विल हेल्प लिवरपूल अ लॉट भाई बारकोला व्हाट अ मूव बारकोला व्हाट अ गोल Bradley Barcola, wow. Bhai, PSG are through, man. PSG are through. I am feeling it. They're through. It'll be a monumental collapse for PSG to get knocked out, man. Oh, bhai, Bradley Barcola, man. Crazy guy. What a goal. What an insane goal by Bradley Barcola, man. Nuts. F by F for sure. इसको स्कोर अपडेट करना पड़ेगा इसके लिए बट या Oof, Bradley Barcola, man. Insane from Bradley Barcola. Bro, I look at Dembele and wonder what could have been. भाई ब्रैडली बारकोला क्या रन किया है यार सो गुड ब्रैडली बारकोला चेल्सी को पास जा सकता था ये बंदा भाई इट्स ओवारी डास हैज परमप्रीत भाई या 100% 100%
कैन साका विन द गोल्डन बूट इफ हालैंड गोस टू चाइना? जब तक साला है तब तक तो नहीं. उसके बाद भी आई थिंक सॉन वॉन हैव बेटर चांस. Arteta took 6 years to build this team. Yeah, but first we had to use some players. जैसे आपका भी सीन चल रहा है, ठीक है ना? You are playing some players that you don't want to play, like Sergi Roberto, Oriol Romeo. You don't want these guys to be there. हमें भी सोक्राटिस को, लिकस्टाइनर को, एल नेनी को, ग्वेंडूजी को, इन सबको खिलाना पड़ता था. डेविड लुइस को, पाब्लो मारी को, है ना? धीरे धीरे टीम बनती है यार. पहले आपको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जो भी रॉट है टीम में. सोसिएडाड कम थ्रू, सोसिएडाड आर थ्रू, बट डिफेंस अच्छा चल गया भाई. टेलिंग यू मैन, आई वांटेड पीएसजी आउट सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे कैन टर्न अप मैन. सोसिएडाड जैसी अच्छी टीम के अगेंस्ट क्या खेल रहे हैं वो अब. गिल्फी सिगर्टसन भाई क्या हो गया बंदे को. ही वॉज जेल्ड फॉर अ वाइल और ही वॉज सस्पेंडेड फॉर अ वाइल. Then the case, I don't think it got dropped, but whatever it was, it is what it is. Don't include Guendouzi, he's beating Bayern right now. That's fair, man. More than Arsenal have done. Nelly has a bigger chance of winning Golden Boot. I agree. I think so. I agree as well. Good shot. Saka has more of a chance in being like the player of the year types because Saka के GA बड़े अच्छे चलते हैं. इस साल भी Saka has already equaled his last season's goal and assist tallies. Imagine. Check Twitter, you tagged you in a post. एंड में ही चेक करेंगे यार अब राघव. एंड में ही चेक करेंगे अब. 15 minutes and then we're out of here, man. Daksh, at this moment, if you had Rice at 6 and Jude at 10, who would you pick as a third midfielder from current times to make it the most successful and lethal midfield? Who is like the best destroyer in the world, man? Rice तो है ही अच्छा, but who is the best destroyer in the world? Let me think. Rodri, man. Rodri. Rodri, Rice and Jude. इंशाल्लाह मिडफील्ड भाई. 40 हिट कर लेगा साका ऐसे खेलता रहा तो. एग्जैक्टली मैन. KDB is a good shout as well. KDB is also a great shout. Bhai, what a goal from Bradley Barcola, man. Kobe Mano, come on, it's too early. Fully fit Partey, imagine. But no, Rodri or KDB. Most likely Rodri. Because I think Rice can move forward. Jude anyways moves forward. And I think Rodri can do defensive as well as move. BRR. अच्छा ब्र मतलब कोल्ड या इट इज अ कोल्ड मिडफील्ड. मेरे को लगा तू उसका ले रहा था राइस रॉड्री एंड जूट का. तू ऐसे कर रहा था. मेरे को क्यों लगा. ब्रो आर्सेनल का मसला ये है कि वो छोटी टीम से भी हार जाती है और सिटी लिवरपूल कभी नहीं हारती, वरना पीएल हमेशा आर्सेनल ही जीतते. यार ऐसे तो ये बोलने की बात है कि सिटी भी वुल से हार गई एंड लिवरपूल ने भी लूटन से पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए. यार कोई भी टीम कभी भी हार सकती है. दैट्स द नेचर ऑफ कंपटीशन. अब बारसा ने खाए ना 3 गोल ग्रनाडा से हैं, और उन्होंने खाए गोल ना, मतलब विलारियल से गोल खाए, उन्होंने जिरोना से गोल खाए. ऐसे तो क्या बात होती है यार. एनी टीम कैन बीट एनी टीम ऑन सम डेज. दैट्स फाइन. कंटेक्स्ट भी होता है. समटाइम्स यू मिस प्लेयर्स, समटाइम्स यू जस्ट कांट स्कोर बट यू शुड बी विनिंग. दैट्स ओके, इट हैपेंस. ऐसी बात तो नहीं है कि सिटी और लिवरपूल नहीं हारती. दे लूज प्लेंटी मैन, कम ऑन. बर्नार्डो इज अ गुड शॉट. या ओ ओ रियल मैड्रिड भी ऑलमोस्ट हार गई थी. या मैन ऐसी बात नहीं है. समटाइम्स यू हैव दिस फ्रीक रिजल्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. एनीवेज हियर कम सोसिएडाड. मूव कर दिया. कूबो के पास बॉल है. कूबो 1v1. अरे शॉट ले लो भाई. तुम शॉट ही नहीं लेते हो यार. सोसिएडाड की सबसे बड़ी इशू यही है, वो शॉट ही नहीं लेते हैं भाई. ड्रिबल्ड आउट भाई, ड्रिबल्ड आउट. Brilliant by Lucas Hernandez, man. I don't understand why Wilshere gets so much. He was so good when he was fit. Odegaard reminds me of him. Bhai, Wilshere was a different beast. Wilshere was Rice and Odegaard combined. He was that good. मेरे को तो डेम्बेले का समझ नहीं आता. ये बारसा में हॉस्पिटल से बाहर नहीं आता था. और आई थिंक इट्स द बारसा मेडिकल टीम यार नितिश भाई. Jude, Rice, Valverde would be a goated midfield. Yeah, that would be a solid midfield. But I would choose Rodri, man. I think Rodri क्या midfielder है. क्रॉस. अरे प्लेयर आ गया बीच में. हपचप हुई फिर भी कुछ नहीं हुआ. जुबी मेंडी ने मूव करने की कोशिश करी, मिस किक हो गया.
Now PSG are on the break भाई. This is their game now. PSG are on the break. अम्बापे को ढूंढने की कोशिश नहीं मिला अम्बापे. भाई सोसिएडाड लुक शेकी इन डिफेंस मैन. राइस फॉर नूनेस कोवाचिच. क्या बोलते हैं दक्ष भाई? मैं बोलता चुप कर. डम्बेले हैज द विजन बट नॉट द एबिलिटी. इट्स लाइक द मुड्रिक सिंड्रोम. टांगे ज्यादा चलती है दिमाग से ज्यादा. आई डोंट नो व्हाई आई लाइक राइस मोर देन रॉड्री. ही इज अ डिफरेंट प्रोफाइल मैन. बट राइस is undercooked compared to Rodri. Rodri is a properly cooked defensive midfielder. कैसे हो पुडिन? वैसे बाय द वे नाइस टू सी यू हियर. हाउ आर यू? पीएसजी बैक इन अटैक. वो अब बढ़ ही नहीं रहे. दे आर हैप्पी विद दैट 2-0 विन मैन. ओह, ये क्या किया डेम्बेले ने? कुबो लूकस हर्नांडिस को बीट करने की कोशिश कर रहा है. कुबो अगेन. अरे लूकस हर्नांडिस मैन, ग्रेट डिफेंस भाई. फाउल. राइस बिहारी है इसलिए अंडरकुक्ड है. अच्छा. How is Zubimendi playing? Yeah, he's been okay, to be honest. Nothing special today. He's been all right. Honestly, he's been one of the better players. Him and maybe Kubo have been one of the better players. Five aside में prime KDB लोगे या prime Ozil? Ooh. I think prime Ozil is Real Madrid वाला ना? And prime KDB is this year या couple of years ago? Couple of years ago. Good question, man. I think Real Madrid वाला Ozil. Silky player, aesthetic player. ओह, पीएसजी ट्राई टू ब्रेक थ्रू. लेकिन ब्रो पिछली बार आर्सेनल अपनी गलती से पीएल नहीं जीती थी ना. इसमें सिटी की कोई कमी नहीं थी यार. लास्ट सीजन वाली बात ही अलग थी यार. लास्ट सीजन वाली बात अलग थी. लास्ट सीजन वी डिडंट विन द पीएल was because two of our biggest players, in fact one of our biggest players got injured, which is Saliba. He got injured with Tomiyasu in the same game. Now something will change, right? When you replace Saliba with Rob Holding. ऐसी बात नहीं है अपनी गलती से. देयर वाज बैड लक आल्सो इन्वॉल्वड. ऑफ कोर्स वी लॉस्ट दोस गेम्स, बट देयर इज लॉट मोर कॉन्टेक्स्ट देयर यार मेरे हिसाब से. राइस विद ओडेगार्ड इज वर्स देन दाल भात. I believe every team in the world needs Valverde to do the n number of jobs that two couldn't do. Again, completely agree. Valverde is a beast भाई. 5 मिलियन में उठाया था ना उन रियल मैड्रिड ने भाई. क्या कमाल की स्काउटिंग है. एंड सो हैप्पी दैट जूनी कलाफत का जो बंदा है, the right hand man so to speak, Kubo running, उमर सदीक नहीं पहुंच पाएगा. कुबो जूनी कलाफत का जो राइट हैंड मैन है उसने आर्सेनल ज्वाइन कर लिया यार. होपफुली प्राइम ओजिल वाज बीटिंग मेसी इन असिस्ट नंबर्स. या एनी 90s आर्सेनल जर्सीज यू रेकमेंड? 90s वाली यार ले लो. कोई सेगा वाली ले लो यार. सम सेगा जर्सी शुड बी नाइस. 90s मैन, क्रेजी सीन. 90s तो बहुत पुरानी है. City also went 15 perfect games. No, I think City always do that. But it's like how they lost KDB and Rodri and they lost 3 games in a row, right? And as soon as they came back, they were better. So they lost KDB, Rodri. I'm not saying, but Saliba ka loss was a very big loss for us. Rob Holding has played 0 minutes. Bhai, remember Charles Watt was so upset. हमने Rob Holding को कितने सस्ते में बेच दिया था. अच्छा हाँ 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 90s की जो रेनेसू ने लिया. तेरी भी सेगा वाली है ना या ड्रीम कास्ट वाली है तेरी? एक बहुत सुंदर जर्सी है. केडीबी का प्राइम कैसे डिफाइन करोगे? गाय वाज बीस्ट फॉर वुल्सबर्ग एज वेल. वुल्सबर्ग का जो लेवल था एंड अभी जो सिटी में लेवल, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. पुदेनास कांटे और वल्वर्डे भाई. प्राइम कांटे भी बहुत बढ़िया था यार. प्राइम कांटे को जेवीसी वाली है तेरी. राइट 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 राइट. वन करंट बारसा प्लेयर यू वुड लव टू हैव एट आर्सेनल? गावी और लमीन. पीएसजी, ये मेरे को लगता है पीएसजी हमेशा अम्बापे को क्यों ढूंढती रहती है. बाप रे. जेर एमरी भाई, ब्रिलियंट प्लेयर. England's midfield and front lines for Euro: Harry Kane, Saka, Foden, Jude, Henderson, Rice. Henderson की जगह मैडिसन भी आ सकता है. प्राइम केडीबी एंड प्राइम बर्ड कैंप. कम ऑन मैन.
आप आर्सेनल फैन से पूछ रहे हो प्राइम बर्गकाम्प के ऊपर, आप किसको लोगे? किसी को भी नहीं. All these Lamine Yamal shouts only for him to get an. अरे यार प्लीज, ऐसे bad karma, don't put it out in the universe. He's a great player, man. We should all enjoy his talent, even though you might be a Real Madrid fan. ऐसे मत करो. Sociedad. Do you want Meno to play for England? Imagine Rice, Belly, and Meno. I think Meno still has, yeah, will find it very difficult to break into England. I mean, he might get a call up, he might play for a while, handball, but Sociedad ने छक्का मार दिया. नहीं कर रहे केडीबी को अंडररेट. अब देखो, मेरे हिसाब से प्राइम ओजिल वाज बेटर बिकॉज मैंने उसका प्राइम देखा था रियल मैड्रिड में. आई थिंक केडीबी इज द ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, इसमें इसकी मैंने ये थोड़ी कहा कि केडीबी बुरा प्लेयर है. मैं बस कह रहा हूँ मेरे को लगता है कि ओजिल बेटर प्लेयर है. एंड आप एक आर्सेनल फैन को पूछ रहे हो जिसका फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज डेनिस बर्गकाम्प, कि डेनिस बर्गकाम्प बेटर है या केडीबी? कम ऑन यार. नापोली वर्सेस बारसा. आई थिंक बारसा गोस थ्रू. मुझे नहीं लगता इस राउंड में कोई अपसेट्स होंगे. आई थिंक बारसा गोस थ्रू. सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप वुड बी द इंटर एटलेटिको वन. बट बारसा आर ओवर यूजिंग. हाँ हाँ, ये तो है, ये तो सत्य वचन है भाई. बारसा आर ओवर यूजिंग लमीन यमाल, ये तो 100% बात है. या एग्जैक्टली. प्राइम देखो तो आई वुड टेक ओजिल, बट केडीबीज लॉन्जेविटी इज सो इनसेन. ओ 100%, 100%. बट वो प्राइम वर्सेस प्राइम की बात हो रही थी यार आयुष, इसलिए मैंने ओजिल लिया था. सी. ओजिल वाज बीस्ट इन मैड्रिड भाई. ओजिल रैन द शो भाई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज हार्ट ब्रोकन व्हेन ओजिल लेफ्ट रियल मैड्रिड. ही वाज पिस्ड. लात्सियो वाले का क्या चल रहा है? 1-0 है भाई उधर तो. पेन. PSG are through भाई. if it's 3 it's over भाई. अम्बापे कुछ नहीं हुआ. David Silva one Mata. Good shout. David Silva. गुड नाइट यार इस्माइल भाई, गुड नाइट. मैंने आपके लिए यहाँ पे स्कोर बोर्ड डाला हुआ है, तो जब स्कोर बोर्ड में चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके आसपास गोल हुआ है. Ozil at Arsenal were amazing too. We just didn't give him a clinical striker. That's true, man. We had Giroud up top. Ozil and Sanchez were cooking something very different. Do you think Odegaard can fill the boots for Ozil? I think he's a completely different creator, man. Odegaard is a hard-working creator. Ozil was just get me the ball and let me do my magic kind of creator. Which is better, Rice, Rodri or Casemiro? Prime में Casemiro, man. Although I think Rodri will surpass him very easily. PSG. Can they get their third goal? Offside नहीं होगा. Shot again. Save by Alex Romero. Asensio का save. I have seen Cesc in Barca and Chelsea. How good was he in Arsenal? Pudin. Cesc became Arsenal's captain at 18. He used to score goals from straight from the kickoff. मतलब भाग के against Milan. He was the chief creator. He was Arsene Wenger's personal project. He was that good that Barca tried every dirty trick under the sun to get him to Barca. Every dirty trick. You know what they did? जब यूरोस चल रहा था ना, they put a Barca jersey on top of Fabregas. ऐसे ऐसे करके. Everyone from Javi, Iniesta, Puyol, all the managers, I think Pep था उस time. Everyone was like, yeah, Fabregas's Barca DNA. Everything. भाई उसका सर घुमाने की पूरी कोशिश करी थी. उसको कन्विंस कर दिया that आर्सेनल की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, छोड़ के आ जाओ उनको. Crazy, man. And that is why I've seen like Cesc at all these clubs, even Chelsea, he was really, really good. But I think the kind of potential he had at Arsenal, मुझे नहीं लगता वो कभी live up भी कर पाया था. Do I smoke? I don't smoke, Karthik. I don't smoke. Yeah, full manipulation. Harry Kane when the lights are brightest. Bhai. Imagine he gets knocked out of Champions League.
मेरे को तो रेनिसो एक फियर क्या था, मेरे को एक फियर था, वैसे बायर्न अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, नेक्स्ट गेम म्यूनिक में ही है। पेप के माइंड गेम्स आर फायर, इट्स फायर व्हेन इज माइंड गेमिंग फॉर योर टीम, व्हेन इज माइंड गेमिंग अगेंस्ट योर टीम ना, देन तो भाई गुस्सा आता है, मतलब मन करता है उसके टकले पे ना बर्तन मार दूं मैं। एनीवेज, what were we talking about? Yeah, मेरा एक fear था रेनेसो that Bayern will qualify, we'll meet them, and Harry Kane will be the one to end our UCL campaign. And I was like, I would never hear the end of it from Spurs fans. Imagine, bro. Imagine. They are already out of the DFB Pokal. Saarbrücken से हार गए थे वो लोग. Penalty shout नहीं मिला यार Sociedad को. PSG are on the counter. Mbappe ने बॉल निकाल दी है. Dembele is running on the wing. Dembele on the left. cuts in, cuts in, cuts in, shoots and misses. Oh, Kolomwani था ये. Racismo, racismo, racismo. कोलोमुआनी था. चिल, कोई बात नहीं, हम चिल नहीं करेंगे. Anyways, it was an okay game, man. It was an okay game. So yeah, Bayern lost against Saarbrücken, so they're out of Pokal. Leverkusen can win the Bundesliga. They might get eliminated from the Champions League. Let's see, bhai. Lazio miss. Oh, we lent Kane and Muller at the Emirates. Insane. It'll be a very good send off, man. It'll be a very good send off. Can you see Solanke as an Arsenal player in the future? No, man. जैसे मैं कहता हूँ ना आरुष, हमारा वो लेवल अब नहीं रहा है. We will not take project players anymore. We won't take almost theirs. We will take these sure talents from now on. Umar Sadiq plays back. Zubimendi. क्या खेलता है यार Zubimendi? This Zubimendi is very silky on the ball, man. Get him to the Emirates. Get him, Mbappe, Jude, Rodri. या इन चारों को ले आओ भाई एमिरेट्स पे. नो मैन, Zubimendi played really well. FIFA 18 वाली आर्सेनल एपिक थी, लेकिन FIFA 19 वाली नहीं लो भाई. आर्सेनल हैव ऑलवेज बीन अंडररेटेड बाय FIFA. आई थिंक इट इज ओनली दिस ईयर्स FIFA दैट आर्सेनल आर अ प्रॉपर्ली बिल्ट टीम, एंड छक्का मार दिया अगेन. देयर इज अ रीजन Zubi is closest to Bussy. भाई ले आओ यार उसको आर्सेनल पे यार. वी आर क्राइंग आउट फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेयर. This Bayern is awful. How did you lose to them, Rishi? Bhai, how did you lose to them? How did you lose to them? You lost to them twice, no? Kane's curse versus Koman's luck. भाई कोमन की तो इंजरी हो गई. I think Fonzie will also leave Bayern after this. I think Fonzie will also leave Bayern after this. भाई 1 मिनट बचा है इस गेम में यार. खत्म होने वाला है. ओह, चलो राघव का देख लेते हैं. ना 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 ना. No way, Raghav. Really, you got it? Raghav, send me that screenshot with the time as well, man. Although you might be correct because people are saying like तेरे ऊपर एक chat थी. But no way. Tuchel is overrated. Let me check, man. एक बार Fortmob पे. Is the time being given correctly? It must be given correctly. Oh, it's 58th minute. You were 57 minutes. No, it's edited. LOL. मेरे को डर लग गया था. But anyways, it was 58th according to Fortmob officially. Tuchel is overrated. Jesus Christ. Injuries. अच्छा, injuries. हाँ, fair enough. जुबी तो जावी को भी चाहिए था. हाँ यार, बार्सा का पैसे का इशू है ना, और कुछ नहीं. That's the only issue. Barca's money is the biggest issue. Yeah. Zubi will go to Barca. Let's see, man. I don't know. Maybe he won't. Utsab bhai. कार्तिक है भाई, सॉरी. Maybe he won't. Maybe he will. देखो यार, I have a feeling he'll thrive at Arsenal. Maybe he's built for Barcelona, but Barca के पैसे will always be an issue unless they sell Frankie. Then I can understand. Another beautiful ball to Umar Sadiq. नहीं पहुंची, क्लियर हो गई. 4 minutes of added time है guys. अभी हरा देते इनको. You predicted 7.
कोई नहीं भाई, कोई नहीं, यू वर क्लोज, यू वर क्लोज, जस्ट ऑफ बाय 50 minutes. फाउल ऑन पीएसजी, फाबियन रुइस, उमर सदीक लड़ रहे हैं, नहीं हमारी ट्रॉरे लड़ रहे हैं. भाई, I'm so tired, man. So tired. Very tired. I don't want to sleep. I want to make the most of my free night. Just off by 50 minutes, there, Raghav. Zubi Mendy said he wants to set Sociedad and wants to be part of the project. I know. I know. But we should test the waters for him. Rishi Bhai says we can give him a lovely British experience. If we se matlab hai aapka Man United, nahi. Delict next club. I think Man United. I think Delict will go to Man United. They need some guy. I think they'll replace Varane with him. And considering the fact that even Lisandro is injured most of the time now. अच्छा किमिच को कह रहे हो ओके 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 सो या आई थिंक Delict will go to United. Here comes Sociedad. Can they survive and save something at the end? भाई नहीं हो पाएगा. पचेको से मिस हो गई. PSG controlling this game beautifully now यार. If Bayern goes trophyless, then Musiala is coming to City summer में. ऐसा कुछ नहीं है भाई. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ट्रॉफी, एक साल 13 साल में पहली बार वो ट्रॉफी नहीं जीते, सब लोग छोड़ो नहीं 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 अब तो नहीं चाहना हमें. रिलैक्स मैन. सिटी में ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं. दे सिटी वांट वर्ड्स आल्सो, सिटी वांट मूसियाला आल्सो, हैं सिटी वांट फलाना ढमकाना प्लेयर आल्सो. सब सिटी को चाहिए. पकेटा भी चाहिए अपन को, पकेटा भी चाहिए, वर्ड्स भी चाहिए, मूसियाला भी चाहिए, हैं और क्या चाहिए, किमिच भी चाहिए. और इज इट ट्रू किमिक इज अनहैप्पी एट बायर्न? पता नहीं यार, लुक्स लाइक इट. रूमर्स तो स्ट्रांग थे इसलिए पेप को सब चाहिए. हाँ पेप को तो सब भी चाहिए. Watch Real City, Liverpool, Arsenal interview with dominate UCL while we play 15-16 or under an academy level. हाँ यार प्रथमेश, देखते हैं. It'll be very interesting. Barca versus Napoli. उस गेम का वॉच अलोंग तो नहीं होगा. I'll enjoy that game in peace. अच्छा है अभी तक अम्बापे के लिंक्स नहीं आए हैं भाई. सिटी को अम्बापे भी चाहिए. अम्बापे के लिंक्स साथ हो गए ना आर्सेनल के साथ. आर्सेनल को चाहिए अम्बापे. I predicted 57 but Barcola not Mbappe. Damn. Full time Lazio won, Bayern nil by huge result for Lazio. Huge result for Lazio. सिटी को केन और राइस भी चाहिए था. दैट इज ट्रू कार्तिकेय भाई. सिटी वांटेड राइस. दे बिड 100 million फॉर राइस. वी जस्ट बिड अ लिटिल बिट मोर एंड वी गॉट आवर बॉय. City actually talked to Rice and Rice said I'm going to Arsenal. How cool is that? I love Declan Rice. He said I want to go to Arsenal. मजे भाई. Sari for the win भाई. Mauricio Sari for the win. Here comes PSG with the last attack of the game and another corner to PSG. Or is it a throw in? It's a throw in. पोल के हिसाब से 24% people are right. Ooh, let's check. What is the poll saying? Lazio जीतेगा. Fair enough भाई. Fair shouts everyone man guys. 211 likes हो गया. Thank you so much. The game is up. Thank you so much man. Sociedad underwhelming. 1 MUSC पे आपका ह्यूमर स्लैंडरिंग हो रहा है. क्लियर रिफ्ट होने दे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मोहा की तो है, अपना दोस्त है वो, होने दे. बायर्न हगेगी, सही बात है यार. बट नो, आई वुड से underwhelming man, underwhelming from Sociedad. You were in the 23. Rice said I'm going to Arsenal because I don't want trophies, says Parth. No, he said I want to play for Mikel Arteta. I don't want to be at a club जहाँ पे जीतना is like a given because वहाँ पे तो कोई effort ही नहीं है, and where I'll just be another piece in the cog rather than a potential legend in the making. इसलिए था. खैर anyways, ये सब तो हमारे बीच चलता ही रहेगा यार. It is what it is. Underwhelming game था. Congrats to PSG. 2-0 जीत गए. I am going to enjoy my night. You guys enjoy your night as well. Just really tired man. चलिए चाहिए आप लोग भी मजे करिए, दूसरों की स्ट्रीम देखिए. आई विल सी यू टुमारो होपफुली फॉर अ चिल स्ट्रीम. बाकी कल बात करते. चलो टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट.